Hello and welcome. In this section, we're going to take a comprehensive introduction to everything related to Figma. We'll be looking at the specific tools we'll be utilizing within Figma and also exploring the various properties and features that we'll be making use of throughout our lessons. And first of all, I have my Figma application open. On the very first major portion that is visible to us is our canvas. If I right click and then click on show and hide UI, okay, this is how we first expand our canvas, and this is the maximum visibility our canvas can have. For example, apart from that, we have left and right properties, which I will explain in short further on. If we want to expand our view, our canvas, we can expand it this way, and by right clicking again on show and hide UI, all our left and right UI elements will reappear. And first of all, if we focus our attention on the UI in the left hand portion, then right at the very top, we can see the file's name which is of course also clearly visible inside our tab. Therefore, from this location, we have the option to easily modify the file's name. Below that, we have two distinct options available, one for file and another for assets. Currently, we are situated within the files section. Inside the files section, the very first thing we see is pages, which is the section related to pages. And within this pages section, we have created various different pages. We will be working on these 3 pages further along in the course. And this particular page, I've just created it for this specific section so that we can use its different properties and tools and get a proper introduction to them. So we can create different pages where we can organize our various sections further and so on. And in this way, we can create a page here on the plus icon. It's as simple as that, just by clicking. Secondly, regarding the assets we possess, we have the capability to create various libraries. And later on, as we proceed to develop our components, we will certainly be making use of this assets tab throughout the duration of this course. Okay, on the assets tabs, the advantage for us here will be that if, for example, we have already created components, then we can search for a component here, and that component will then appear for us. So, for instance, right now I've searched for button because in the future within this course we will be creating buttons, and this button that we have created, I can simply drag it and drop it right here. So the advantage that we will gain from these asset tabs is this, and in addition to this, let me just remove this for a moment, right? Beyond that, if we want to include or exclude any libraries that are not part of the components we've already created or our existing UI kit, then we can easily manage their inclusion or exclusion from here. I'll come back to the file section once more. As syntax said, and here at the very bottom, right after the pages option, what we have next. If I were to quickly close this window, the next available option that we find under the file menu is for layers. So with layers, we have a system of hierarchy, and in this system, all our elements and then the nested elements, all of them are visible within the hierarchy. So we'll understand this in a bit more detail, or rather, we'll explore it further. When we start using these tools. And if I move to the midsection now, and if we observe the mid-bottom area, you'll see that currently all the tools we have, our entire toolkit, every single tool is visible right here at the bottom. First of all, we have the selection tool. The set emphasize the selection tool. On its section, we have the move and shift and hand the options. With the move tool, we can move any element. For that, first I will explain the frame and section that we have in the next part. Then we will come back to this. So we have frames and we also have sections available. Primarily, we are utilizing these frames because we need to apply auto layout. And auto layout, in short, I will explain a little bit more about it in the future. And we have a section. We utilize this section to organize all the major frames that we have within our setup. And slice among all these options is the least utilized tool that we possess. So for the time being, we will skip this particular one. Now next we'll see that specifically for creating polygons, we have various different shapes available. Among these, we have rectangles, a line tool, an arrow tool, an ellipse tool, a dedicated polygon tool, a star tool, and then of course at the very end we also have the option to import an image. And in this manner, we are able to create these various polygon shapes utilizing the polygon tools with the assistance of this specific tool. Next, we have the pen tool available to us, which also includes both the pen and pencil tools. We will be looking at this in more detail in a short period further on in the future. Next, we have the text tool.
I can say we can activate the text tool using T, of course, and by activating it with T, we can then write any text directly onto the canvas. So this is our dedicated tool for writing text, and we also have a tool specifically for comments. And then finally, we have a section for plugins. Here we can import, install, and effectively utilize various different plugins and assets. So first of all, of course, what I'll do is we have a frame here, and in the frame section, the frame is associated with F. You can use the shortcut key F. Of course, we won't utilize all sections, and as I explained, we use slice less often anyway. So first I will select the frames, or even if you press the F key, this tool will also become active for us. So I'll press the F key now, and you'll see this tool has become active. If you look at the right hand side, you will notice that we already have a list of predefined resolutions, for example, for iPhone 17 and iPhone 16, and we can easily set the resolution for those mobile devices by simply clicking on them. For example, if I click on iPhone 17, or its resolution will generate a frame of that exact size for us. And on the left side, you will see a hierarchy of layers has been created, and we now have a frame. The frames icon will be this, and if you hover over it, it will still display frame. And similarly I will undo, and if I press F and select the frame tool separately, then we have options for different tablets as well. We also have fonts to of course options for desktops. Similarly, we will click on them and frames will keep getting created for us. So let's say we want to create a custom a custom frame. I'll go back to the frame tool. So what we'll do is when we have the frame tool option, we'll click and drag it, and if we're dragging it while keeping its width and height constant and expanding it uniformly, then we'll press shift, and it will expand uniformly from the left and right sides and also from the left and bottom. Or you could describe it as expanding in both its height and width. It will of course maintain a perfect square form, and if for example I want to keep the length, or rather the width smaller, and I want to increase the height. So this is how we manually adjust it. Down at the bottom, we have the resolution displayed for us. And even after we're creating the frame, we can also edit it from the properties. So this is how we work with the frame tools. And with the frame tool, we create frames in this manner. And then what we have is this is the selection tool. With the selection tool, I will now explain it further. Using the selection tool, we utilize it to move any frame that we have. And for now, I am of course selecting and moving the frame. Next, we have the hand tool. So what exactly do we do with the hand tool? Instead of moving the frame, is the canvas that we are actually moving. And now that I'm moving the canvas, I'll just grab another frame, and then explaining it, well, that will be much better. Wait, now you can see the two frames are side by side. I will go ahead and center them. For the time being, I'll drag one of these frames using the selection tool or the move tool. I am moving it with the help of this, and then we have the hand tool, which we can activate for a short period when we press the spacebar. As long as we keep it pressed, this particular tool remains active. So I will click on it and drag it, and our entire canvas, the canvas itself, will be moving. So this is how we can move things. And to move a single frame, we will use the move tool and to temporarily activate it, you can press the spacebar to use the hand tool. So in this manner, we will have covered all these particular tools. Then finally, we are left with a scale tool, which we can select. And of course, we can also activate it by pressing the K key, its shortcut. The scale tool is useful to us for scaling frames, for uniformly scaling them. For example, and then if we make a selection with the move tool, of course, the outermost section we have its width and height will be set. But for example, if we have nested elements which are covered by the frame, and inside the frame different elements have been used, buttons have been used, and form input fields. Furthermore, even images have been utilized. So when we scale this using the frame tool, naturally it's our outermost section that gets scaled, but instead, for example, what we actually want to do is scale all the elements of the frame that are contained within it, and the outer frame itself should also be able to scale. So we scaled it using the scale tool, and most probably for major elements we typically use the scale tool for scaling instead of scaling it through the selection tool. So if you, for example, if you want to adjust the height, that can also be achieved in this manner. You can place it on a particular point. All right, currently there are more significant changes in width or more significant changes in height, or you can scale it uniformly in this way.
With the help of the tool and the second option, when the scale tool is active for us, we will manually set the width and height from here, and of course the inner elements dimensions will be adjusted accordingly, and naturally our aspect ratio will be locked. So increasing or decreasing either the width or the height will similarly affect the other value, and this is how the scale tool functions. The scale tool to deactivate or disable it or to go to another move tool, you can also close it by clicking the cross. And now we are back on the selection tool, or when we are on the scale tool, if we press V, we will again be, if you press V, then we will again be on the frame tool. I meant the move tool, sorry. So this is how the move tools and then scale features are covered. And then I'll quickly demonstrate the section for you. In this section, if I drag and drop, all the major multiple frames that we have created will be included within our sections layout. We've entered a specific portion. For instance, I can name this particular section to indicate that all these frames are related to our login process. And similarly, when we've created a large number of frames on a larger scale, and we end up with numerous frames, then to effectively organize all of them, we make use of the selection tool. I'll just undo this action now. Then what we really have, we're not using the slice tool here, was of course it's not within the scope of this course. And then next we have the rectangle tools. This will work almost similarly. The basic shape that we'll most probably be utilizing is the rectangle. I will drag the rectangle and we can create a square with the rectangle similarly, just like we created the frame by pressing shift and expanding it. You can shrink that down like this, and it will do so uniformly with shift. and what if we were to go left? If you wish to increase the height, you can certainly do that. If you want to increase the width, we can also do it this way. And once we have, for example, set it, and then if we wish to enlarge it based on this specific width and height, then we can of course lock the aspect ratio as well. The next time we increase it, there will be no need to press the shift key. Due to the aspect ratio being locked, we will have uniform expansion. Next, of course, since we currently have this polygon tool, there will be a clear difference between the polygon tool and the frame. I'm going to take the frame as well. I'll press the F key and create a frame right here for us. For now, to demonstrate, if I select this, and if you look in the hierarchy, you'll see here that we have a frame. This is the frame we have, and if you hover over it, the frame will also be listed. Then we have a rectangle, it is a piparanla, which is a polygonal tool and a shape, and hovering over it will also make the rectangle visible. Now there will be another difference here, of course, because frames are used for applying auto layouts. I will explain that in a short while. So what exactly is this auto layout that we have? Well, a frame for us is primarily utilized to make use of the auto layout feature, whereas we use a rectangle to create various shapes, different kinds of shapes, to give form to different sections, or we utilize it in such a manner wherever we need to create our visual elements. That's when we for icons, for example, in sections related to such elements, we are predominantly using rectangles here at the specific point where we of course don't need to employ auto layout or meticulously organize elements, and where our primary requirement is simply shapes. For instance, if we desire an image's shape to be presented in a perfectly circular form, then by utilizing basic rectangles and subsequently decreasing their corner radius, we can, for example, effortlessly achieve that desired circular shape, and following that we are then able to effectively utilize it. For example, to place an image piano, we can utilize these kinds of elements, and where we don't have to implement auto layout, just need to give a specific shape to an object, or when we need to create icons at that particular point, we would be utilizing the rectangle tool. The second point, which of course I'm going to explain, is that we have a frame available. Once the frame is selected, I will press enter on it, and pressing enter will then show you no more children to select. And when I select this particular item, and when I press enter, this mode becomes active for us. You could say it's like a vector mode, or an edit mode has now opened up for us, and we can change all of its shapes. Unlike the one that we had as it was framed,
we are unable to make any changes to the existing shapes of the frame. And what exactly do I mean by modifying them? For instance, I'm going to select this particular point right here, and then I will begin to move this specific point in this manner, and just like that we have successfully modified the overall shape of the rectangle that was originally present. We are able to move these points in various directions. For instance, if we need to create an icon, we can easily change its shapes in this manner and then create an icon. This is precisely how we can utilize the rectangle tool effectively, and naturally the edit mode can be enabled within this, whereas it is not possible to enable it in a frame. And this indeed was the second key difference. Once we've activated our edit mode, all the different options become visible again on our original toolbox or toolkit, let's say. A shortcut has opened up above it. The first one here is the section tool. Then we have the lasso. With the lasso, we can usually make selections in that manner. For multi-selection, we can select using the lasso. Next, we have the shape builder tool available to us. I'll explain the shape builder tool by first taking a copy of this object. To create a copy, we can simply use the keyboard shortcut Ctrl+C, then Ctrl+V. The duplicate copy has been placed right on top of the original object. The newly created copy, we can then drag it away to separate it, or I'll simply undo the last action. And if I need to take a copy of this, I will press and hold the alternate key down and then drag with the mouse to create a new shape. And in this manner, we can easily create a new shape. This is the shortcut key, the one we'll be using. Now I'm going to explain the shape builder tool to you. And for that purpose, what we'll do is we'll merge this shape with this one a little bit, for example, at this specific point. Now if we observe, these two shapes are currently existing separately, and let me just undo that. And we want to consider for now that these are two distinct parts within one rectangle. So what we actually want to do is duplicate this outside of its current position. So first of all, I will close this, or if you press the escape key, it will automatically close. I will then drag this and then I will rotate it, and we will align it perfectly with this. So for now, if we consider we have two rectangles, and the two rectangles that we have right here, they are placed in different positions. For instance, we want this to become a single unified shape so that we only have one instance of it, and when we make other selections, it should appear just once. And to achieve this, one method is that after selecting both of these elements, we could either organize them within a frame, or more commonly what we prefer to utilize instead, since we don't intend to apply any auto layout to them, is to where auto layout is not required, then other elements, if we need to organize these items under a particular group, we then bring them into group selection. I will right click on this and you'll see the group selection option here, or you can simply press Ctrl+G. So now we are effectively inside one of our groups. So we have an outer group right here. I'm going to select this one just like so. And inside that specific group, we have this particular shape. This was the first method. And when we need this group or frame, if we need to remove it, we'll press Ctrl and backspace, and then our group will be gone. It will be closed for us, and our two rectangular polygon shapes will be placed again. And if we try to move them now, they are separate shapes, not under any group. So then of course they won't remain combined. And secondly, of course, because we were talking about the shape builder tool, so I will now select both of these items, and then I'll press the enter key, and then because we are ready, I'm going to select the shape builder tool. By the way, you can press the M key to activate this tool. Pressing B will again activate the selection tool for you, and with the M key, the shape builder tool is what gets selected. And the shape builder tool will now allow us to merge these shapes together. The significant advantage of doing this is that instead of having two separate rectangles, we will then have just one single rectangle. Yes, this will make it much easier for us to place and organize it effectively. But of course, because these shapes are going to be destructive, and after this, these shapes cannot be undone. And once they've been combined, then to combine them, what exactly will we do? For now, we have the plus sign that's appearing. To delete a font, you'll press alternate and it's removing it. If I click on this section is removed. And for example, let's say we had to remove the midpoint, which is the merging point, and if I click on this point is removed. But we need to combine this entire shape. So what I'm going to do is I will click on this, and then by dragging this line, I will pass it through various different sections from which I want the combination of all four elements, their final output, to become clearly visible and for them to combine effectively. So I have now selected these 3 or 4 selections, and when I will click and then release. So we now have just one rectangle created. Previously we had 2, and now we have 1. In this, various points have now merged and the extra points have been removed, and so when I press the escape key, this is again a single shape.
But as I previously mentioned, this is destructive. We can't easily revert it to its previous state because these two rectangles have now been combined into a single one. And if we need to, We'll need to do it separately. We'll need to separate them. So again, we'll have to cut these shapes. Only then can we separate them. Now these two rectangles won't be separate anymore. And for this, let's look at the next point. This is our fill tool, and the fill tool is used to apply the different fills that we have. So rather than applying it from here, we usually, right hand. however, from the fill option within the UI window that we have, we'll control it, changing its color and other properties. Next, we will have the pen tool. Thus, the pen tool is useful for example, when we have points. And if I click on this point and then drag it, then in this manner, handles will be created for us. And these handles allow us to control its shape both to the left and to the right. And the closer you are to it, the sharper this particular point will become. And the farther away you move, of course, and the band that we observe will significantly increase. To that same extent, the corner of the circular form will become much more apparent to us. And the closer we keep it, of course, the sharper we will have it available. It will be a point, it will have a sharp shape. And for example, if we want to remove this point, I will drag this point over its existing point and then drop it. So in this way, the band that we had created earlier will now be gone. And next we have the cut tool. We can also activate it by pressing X. For example, if we want to cut from this particular shape, okay, and the moment we had cut and then dragged this, let me undo that, and this specific point we cut, and when we dragged it, the fill that we had, it was no longer continuous. These 2 points are now no longer combined together, and because of this, what we have is this. In the fill, you can see that the color which was previously applied is no longer visible. So with the help of this cut tool, we can easily cut various shapes. And next, to join this shape, if we need to connect it to a new point, what exactly should we do? We will simply select the pen tool. I will press P key and we are back on the pen tool again. So that I said that the automatic selection was already on that specific point, and by clicking on this, I will then click right on top of it, and in this manner our shape has once again been successfully joined, and now we have a brand new point available. And this particular point was the one that we had previously cut. So in this way, we have effectively cut out and extracted a new point. Then we have this tool is for setting our stroke. And again, similarly, just like we were doing for fill, instead of that, we are controlling the stroke here, and usually we control the stroke manually from here. So in this way, we can also adjust the stroke. You can expand the stroke or you can decrease it. So in this way, we utilize our shape tools, or you could refer to them as these edit options, or perhaps the vector enabled options that are available to us. And by pressing the escape key, or if I click on close, of course this window will close for us, and to activate it again, we will simply press enter. Next, similarly, we have different shapes. We have those of lines, and in this again we have different strokes. We also have different properties, which I will briefly explain to you right now. We will proceed. We will briefly look at fill, but now first of all, let's take a look at stroke. I'm just the system. Stroke is the border that we have on the outline of any given point. Similarly, just like we applied a black stroke here, this is the border of any vector shape that we have. This is its border. Any corner we have towards to, it will be applied to our stroke. So similarly, I had taken the line tool. Of course, since there is no fill in it, the stroke that we have, and here we have, it has its color, its opacity, its visibility, or we can even remove it completely from here. And of course, here we have its position. I will explain the position a little bit after we discuss the weight. And regarding the weight, we can increase it to control how much width or height it possesses, especially if we have placed the shape in this particular form, for example, like this. So what is its height and dimension, and what is its thickness? In short, we can say this. And now if I explain the center, currently at the top, we have this line in the middle. The scale that is present at its top and bottom is uniformly applied, which has been created at the top and at the bottom. When I set it to inside, of course, its shape has now completely changed. Let me select, and of course, to understand this properly, we will go to this option, and for now we will see that this is the outline we have, and the shape that is on the stroke is our
It's on the inner side of this shape, and of course we have position inside. And if I center it, then the center position is now the center point. And in this, the stroke is applied on both the inner and outer sides, and we would want, for example, just on the outer side. So this is how we can apply the stroke on the outer side. And in the line tool, of course, the line that we have in our possession is a vector polygon. So in this particular context, we were similarly just changing and controlling the stroke. And then of course at the very end, we also have a starting point and an ending point, which is actually a little bit better to explain right here as opposed to over there. So right here we have a drop down menu, and within it there's a start point and an end point. Let me just select that, and then we also have yeah, so we have a start point and an end point. Right now both the start point and end point have none selected. If I round it, we can see that our shapes, the start and end points, have become round. So this is how their shapes can be. We can do that also. For example, if I needed its shape to be different right now, or instead of the end I needed a different one, then I can change that too. And in this way I can adjust its shape according to the requirement, whatever I need. Let me select it. If you want to make the selection easily, of course it can be done from here, even from Arc. So similarly we have different arrows, we have rectangles, there was a reverse triangle, a circle. Usually we weren't really utilizing these, and typically we either set them to none or we need an around shape, which is what we usually end up using. And squares, yeah, of course they work quite similar to none. So this is how we utilize the line tool. Then we have the arrow tool, and it will work in a very similar fashion. If I increase the weight of the arrow tool a little bit, then naturally the endpoint here is shifted, and from here we can shuffle this object and we can also change its direction. So this gives us the arrow, of course, and similarly we also have the ellipse tool available. So we can easily create an ellipse shape, and if we press the shift key on it again, it will uniformly scale, either increasing or decreasing its size. And within the polygon tool we are able to create various polygons. Initially we have the option of a basic rectangle shape. Then if we choose to increase the number of sides for these rectangles, for instance up to 4, we will then observe a distinct diamond shape appearing. By continuously increasing this value, we can generate many different shapes and create them in this manner. In the circular tool material, I will explain one more thing. If we have an arc and we click on that point and start dragging it, we can create different parts of a circle. For example, we can create a half circle if we need it. We can create a 1/3 circle. We can create a 3/4 circle. Sorry, we can do that. 1/3 is needed. If we need a quarter, we can create it in this manner. And the major values that are present there here in the properties panel, they will be provided to us. We will be able to control those. We can also control the ratio itself. I will click on this specific point, and then when I drag it away, our circle will then take this particular shape. And for example, if we require visually, we need to create a circle in such a way that it has fill and other properties. So we can both create and control our circle effectively. And similarly, within the polygon tool, as I've already explained, we can easily increase or decrease the number of sides or the count. And finally, we have the stars tool. With the stars tool as well, naturally we can modify its count, making it higher or lower. And of course we can also adjust the angle, specifically its ratio, to suit our preferences. And lastly, of course, there's an option to import and export images. From there we can import and export images to our system. And similarly, when we insert any of these shapes in the UI key, the option that becomes active allows us to select the pen tool as well. So apart from other options, so we can also select it manually, or I'll press the escape key once to remember these pads, and then I will manually select the pen tool from here. We can also create shapes using the pen tool. This is how I will enter and Sorry, I'll connect this with the last point on the right side, because this particular shape isn't filled or complete yet. So once I click on the final endpoint, this shape will automatically be completed. Now inside this will, because the stroke is applied for now, and at this point if we, or when you click on fill, pause the inner shape, or pause whatever its outer corner, border radius, or stroke may be, pause the entire portion within that inner shape, and the pause, that is what we call fill. Pause, and we can apply the same color to it at this pause. So in this way our the fill will be applied, and the stroke will be for our corners and for our borders. So in this way, with SCSC, successfully created the shape with the pen tool. We can then proceed to modify this shape further exactly as per our specific needs and requirements. For example, so and in this way we can execute that and design various shapes.
however we wanted. And the icons, we are creating things using that very same tool, other than from those rectangle tools or the line tool or perhaps the ellipse tool when we are actually using the ellipse. Anyway, as this is how our tool is covered. And next we have the text tool, where of course if we want to write something, we can, and of course we can control the text in different ways. For now it's linked to our future styles that we'll create. I'll detach it once, so we have all these multiple options. Fonts are installed in our system, so all the fonts are visible here. So if you wish to manually install any font, you can do so, and it will also be listed and become visible. And so we say can select the variety of different fonts. I'll just select this option again. Here are the different weights that are available to us. We can apply these different weights to them. We have options ranging from bold all the way to extra bold. And then we also have this for adjusting the size. There's a list and we can set different sizes for it. And by selecting, we can set it to 128. And then we have these different sizes available, and we've changed these particular sizes from here. What we currently have is applied through the use of variables, and its value can also be manually input in this specific way. Let me show you how we can input space 256, or we can also manually set the value in this particular manner. Okay, so I see command set. The next thing we have here is line height, and we can set the line height to different values. We have variables available for all of these properties. So if we wish to change it manually, for now let's observe how we can increase or decrease the height of the line. And if we look at it for the moment, it has completely gone down to 0. And over here what we've done is we have expanded this and increased its height. And if as we for example we want to set this to auto instead of manually, we can clear this value and press enter, and it will automatically become auto. Its height will then depend on the related text inside or its font weight and size, and the line height will automatically adjust accordingly. Similarly, spacing is controlled from here. We can control line spacing and letter spacing. You can increase or decrease this, and if you manually enter, press backspace, then hit enter. If it came to -5, I guess we'll just manually enter it here. We actually needed a 0 value. No, we didn't want any negative or positive value at all. And automatically for this, it will be a 0 value. And lastly, of course, there will be alignment. So I'm going to expand this a little bit. And here we will see that the letters we have, their alignment can be set to the left, to the middle, or to the right. And similarly, we are now increasing the line height just a little. Let me increase it further, that we're increasing it slightly, and for now it's in the center. We can align it further. We can align it to the center bottom if we wish, or align it to the top if we want. And there's one more thing I'd like to make a note of, specifically concerning the resizing aspect. For the time being, if we take a look, we are quite effectively able to control its height. Okay then, and if we're looking to, or rather if we want to take everything we have here, first of all let me just shift it completely over to the left. We want the secant and the spacing on the right side to remain perfectly fitted, and this outer border should stay attached to the end point of our text, specifically the letter H, so that no extra spacing appears there. So for this we apply auto width. Whatever we click on, it will automatically be applied at the 90. And similarly, if we're dealing with height, we want the height to adjust itself, so we apply auto height for that. And when we manually expand it, it will automatically be in a freeform state, or then it will revert to a fixed size because we have manually set the specific size for it. Then we also have some other properties available here which we can change and explore, and you should explore these yourself. They are quite simple. We can change the case to uppercase or lowercase, and we've got title case. Similarly, we have alignment and also decorations. This is, I guess, quite simple, and we can also incorporate bullet points and similar elements in this manner. And in this way, we effectively cover the section pertaining to letters. And usually our primary focus is placed upon their alignment, ensuring that we are executing the alignment correctly. Wherever we require alignment in terms of height, we will apply auto height, and wherever we need auto width, we will apply auto width. And from this point, typically when we are creating our typography, we will be applying the styles that we have already pre-created right here, instead of us manually controlling it right now. For the time being, if I, for example, select the style, then
a major portion of the properties gets hidden, and we are controlling this property through the style. I will just undo this. And this feature is related to comments. We can also activate the comment functionality within CS. Here we have the ability to write any comment, and as soon as we press enter, this comment will appear right here. For instance, if we have multiple developers, designers, or even clients collaborating on a single file, we can provide various comments. They can also add their own comments, and based on those specific comments, we can then proceed to take different actions. So that was quite simple. And lastly, we have plugins, and these plugins we use for different. I'll close this and search again to list all the icon related plugins we have. So I didn't have to press enter this time, and all the plugins we had have loaded now. Among them, Icons 8 is a very popular option for us, and besides that, we also have Microsoft Icons. And similarly, there are the various different plugins that we can make use of. For example, I will select icon 8. Upon clicking on this, we are presented with the option to either install or save. If we proceed to click on run, the icon 8 plugin will then be loaded for us. I guess it will load for us in just a matter of seconds. And that the tools, alternatively, this plugin will be installed, and from here we can easily import various icons. We can search for different icons right here. For example, I will search for apples. If I click on Apple there, I will just set that our field, then we will get the Apple logo and various other shapes, or more apart from Apple will also become available to us, and different relevant options, icons that are related to our search will also appear for us. So in this manner we can make use of different plugins. This was just a plugin we had, and of course with UCCK we also have this icon here. Or if you want to remove this comment, by the way, we can simply delete it. We'll mark it as delete or resolve, and now our comment has been cleared and we've marked it as resolved. Next, I'll explain that we have options for both drawing and design, like but let's proceed with the design option. We don't often use the draw option. To utilize it, we need to have a tablet. Even then, we'll have the advantage that if we want to draw something, we can create and draw it with these tools. We also have a brush tool similarly, but usually we don't tend to look at these tools. Primarily on the major portion that we cover and focus on is the design. Following that, we have what's called the dev mode. This dev mode is typically utilized by developers who access our Figma files, and they then proceed to utilize that specific portion. So we primarily need to complete 95% or even more of our work within the design phase itself. All the tasks we need to perform must be done within that specific portion, that very section, that mode. Then we have one. Canva will have a different mode, and we'll look at that mode right now. First, we're currently in the design section, and within that we're on design, and then we also have prototype. The prototype feature is for aligning different frames together, and that particular aspect is not within the scope of this course at this moment. So for the time being, we will simply skip this point. We will primarily be focusing our attention on the design aspect. Perhaps in the future we might cover that particular point. And now, of course, once again, I'll move from the left side to the right side, and we'll take a look at all of its properties just once. At the very top, we have the name of the frame appearing. We can also edit the name of that frame right from here to edit the frame's name directly here. You can also edit inside Canva, and then here from here we can change it either on the frame or the group scene as or the window and then again we have various listed resolutions available to us. Say for example, if I want to convert this frame to an iPhone resolution, I've already created and checked it from here. And let me show you. Okay, I'll just go back to the selection tool for a moment. Okay, so here we can actually set up different things for naming. Of course, we need to do it at this particular point and also at this other point.
and I was assuming that at this point it would also be done, but of course at this point we can just select all the resolutions, and renaming of course happens in Canva, and also in the canvas that is available there we can directly rename the frame, and then we can do it within the hierarchy too. Here the option that we have available, again this is an option that is specifically related to dev mode, which we are able to toggle, and by the way we can actually toggle this for the entire frame. If I come over to the selection tool, then of course it will be on this. When I go ahead and activate this, you'll see that an icon becomes clearly visible to us. And what this essentially signifies is that this particular frame is now fully prepared for our developers to begin their design work. This is a ready to design component for them. There are no modifications or changes required for this. I will go ahead and remove this. And usually an icon is also sometimes visible to us right here. And that similar icon, which we can also select and tick from this very spot. And then we can confirm it to mark it as dev. Okay, so the next feature we'll discuss is create component. For instance, if we have a specific shape or perhaps a frame and our intention is to transform it into a reusable component, then we certainly have the ability to create it. We will also delve into this particular aspect later on, specifically when we are covering the dedicated section on components. So we will revisit and explore this point in detail at that time. Next, we have a mask, and we utilize this mask in such a way that we can target a specific portion. For example, I'll select the rectangle tool from here, and then I'll draw a rectangle right here, and then by pressing R again, I'll pick up another rectangle tool. We'll go ahead and change its color perhaps to something like this one here. And for instance, what I'm aiming to do is take this particular portion from the two shapes that we currently have, and I specifically want to mask out this section, ensuring that only its visibility is maintained for us. Once these are selected, I'll click on the mask. The matching section, which is essentially their union point, will then be masked out, and only that specific area will become visible. And this is how we can effectively utilize the mask feature. In our hierarchy, its visibility will also appear in a similar manner. And then I will undo this. Next. What we have, if we look at it for now, the next was on the rectangle frame tool. This was up to this point, but if we select the rectangle, then among these options we will see this particular option. Finally, of course, we will have the edit option available, which we can also perform by pressing enter, just as I had explained to you last time. So I will close this window now. This particular option was for editing. And then when we proceed to check by selecting both of these items, even if only the first one has been selected, we will then see another option appear, which is labeled union for us. However, the union operation is one of the available options. So we have several different options here, similar to how we performed the mask out operation earlier. For instance, if we intend to combine these shapes using the union function, we'll click on union and they will merge into one. And for the time being, if we navigate to the intersection, you'll see these shapes are still distinct. This isn't working in the same way as the destructive shapes we created. This is just a union of shapes. And if you look at the outermost section, it's a union of two shapes. Similarly, I will undo this. Up until now, this wasn't part of the union, and apart from the union operation, we can also perform a subtraction. So from this particular shape, that other shape will be subtracted, and this specific portion was what remained for us. Then similarly, their intersection was precisely at this point, and at that very same point, the visibility will remain exactly the same. I will undo it, of course. Then what happens is it excludes, and it has excluded the entire intersecting point, and the remaining portion is now visible. And lastly, we have the flatten option. And with flatten, what happens is we have some, for example, I will select both of these shapes and then create their union. And if we look right now, we have two separate shapes. And for example, I want these shapes to be combined into a single point, so that they merge into the shape and no longer remain as part of a single group. Therefore, I will proceed to click on the flatten option. And now this shape is no longer part of that single group. It has become a destructive shape. This is precisely how we utilize the flatten function. Next, we'll be coming back to the frame once more, and we will be looking at that a little bit more. Inside the theme frame, I'll take another frame and I'll make it rectangular. And what we'll do is, let me change its fill. We'll manually set a color for its fill. And now in the outer frame, because it wasn't on any frame, understanding this will become much better. For now, we have properties. Since this is here, I'll drag and drop it. If I drag and drop this again, then in the hierarchy, this frame is within the outer frame selection,
and it's its child. So when I move the outer frame, the inner component, our frame, will also move. So for now, I've just randomly placed this here. And we want its alignment to be towards the left side. So what exactly should we do? We have several options available at the top for managing alignment. We can explore and check out the various different options. To set the alignment to the left, we can either click on this specific button, or we can use the keyboard shortcut Alt plus A. Alternatively, to align it to the left, you could also press Alt plus D. What we have here is to move it to the right. Again, I will undo this option is available to us, and for that we will similarly press Alt plus W and it will move to the top. On the option for this is right here, and similarly if we need to do it at the bottom, we'll press Alt plus S. The last option for this is this one. We can use this to perform the action. Then what we have, for example, is that we have multiple items that we are trying to align within that particular section. For example, we want to align them, that this item we have for Stiati should be vertically aligned. So for that, what will we press? We'll press alternate H and they will be horizontally aligned. Sorry, my mistake. They will be horizontally aligned. And similar items, for example, we want that the items we have to align what we have for T and vertically, we will press Alt plus V, and now it has been vertically aligned. This will align horizontally for us and this will align vertically for us. For horizontal alignment, we will press Alt plus H, and for vertical alignment, we will press Alt plus V, or we can utilize both these icons. For the time being, of course, the area of the individual's position is listed here with us. Then below that we have the constraints. You can see these constraints are that, for example, I'll remove them, or even let's just skip them for now, and I guess it would be better to explain with different points. For now, I'll just make this shape small, of course, and then I'll drag and drop the shape here like this. So if we look now, our shapes are fixed. No changes are happening with them like this. And if I check this now, their alignment is to the left and bottom. So what I'm aiming for is that when our height and this element decrease, the constraint should be maintained from the left side and the top side. For example, if I select the frame again and then move it, you'll see that our portion was already aligned and constrained to both the left and the top. So it's moving along this specific section. It's moving in conjunction with that section. Similarly, I want this section to remain attached to the top and also to the right side. Similarly, when I move this frame, the inner element is properly aligning and moving along with it. Similarly, for this one, we want this one to be with our left side and with our bottom side, and this will, of course, select this particular frame, and this, let me show you. Okay, what we have here isn't visible to us. And okay, I guess I'll just duplicate this first, and on this we need to ensure that we have visibility on both the right side and the bottom side. And why isn't it enabled for us on this? And then let me see what we have here. Okay, I suppose there might be some kind of mistake here, or perhaps a bug which is causing its visibility to not appear correctly. So in any case, let's just go ahead and delete this. And because I mainly wanted to explain that by applying constraints onto these elements, the specific points whose constraints we have already adjusted, if we then proceed to move the outer frame, the inner section will consequently move along with it, precisely where its constraints are attached to that section. So this is the advantage we gain from using constraints. Then, of course, it's quite simple from this point onwards, because we've already manually set these parameters. Our left and right settings remain exactly as we had configured them for the left and top. It's rotation, and rotation is quite simple. So yeah, we can rotate it, of course. Then we also have the flip option available. I will expand on this further, and then I'll explain the flip function. We can flip it in this particular manner. Of course, we can rotate it by 90 degrees. We can flip horizontally with Shift H, and of course vertically too. To explain that, I'll go to a shape and we'll drop this shape inside a frame. First, I'll make it small. To drop it into a frame, we right click and select frame selection, and then it's placed inside a frame. So now we want to flip the inner shape of this frame.
So to achieve that, we will simply click on it, and you'll see the shape has now been flipped horizontally for us. Similarly, to perform this action, we use the shortcut key H-Shift-H, and to flip it vertically, we will press Shift-V, and it will also be flipped vertically for us in the same manner. So this is the method by which we are effectively utilizing the flip. Then the portion that we have, the major portion that comes to us, is all about auto layouts. And auto layouts for us are the method for organizing any frame, specifically for organizing its inner elements within that frame. That is what auto layout is, and this is mainly Figma's strength as well. When we create anything it's not just for a single instance on the CT10, but so that in the future, if the frame's height and width are adjusted, then the nested elements, all the alignments and all the content we have should align and organize themselves. So let's take a look at that. First, we'll see that we have this one frame, and there's an outer frame and an inner frame, and we also have a text. In the text, we'll write ABC. So I'll just increase this a little. Okay, let's keep it at 96 for now. So there's an outer frame, and that outer frame is the parent frame of this text. The text has been dropped inside it, and for now, let's just randomly set its alignment like this. And now we want to apply auto layout to it, and we want the auto layout to be applied. In our auto layout, we have two options available. We can either arrange it vertically or horizontally. What is the main purpose of arranging it vertically? I'm going to duplicate this now. And on that, we will write XYZ, and its position, I will make a little random again. For now, if we observe that the auto layout for this particular frame is not enabled and it's currently in a freeform state, to enable auto layout, we will either click on this specific icon, or we can directly click on these options, choosing either vertically or horizontally, and then auto layout will be enabled for us. So at this moment, we want this particular text to remain at the top, and we want this other text to move to the bottom. So for that, we'll say we'll apply the vertical auto layout and its alignment flow. So when I click on this, one thing happened. It aligned one of them such that the ABC text we had at the top is now at the top, and the XYZ text that was at the bottom is now at the bottom. And secondly, it has changed its own shape. The intention behind changing its shape means that it has adjusted both its width and also its height. And this particular change has occurred because if we observe in the drop down menu, we have a fixed size option, a fixed width, and within that fixed size, here is our fixed height setting. So it's formats in this manner. It is currently actually in a fixed state. However, when we apply auto layout, its height and width automatically transition into what are called hug states. What hug states essentially means is that it will remove any available free space, and then it will automatically attach itself to all of its inner content. And for now, if we observe auto height is applied here, it's already applied. And we want that its text's inner part, as I explained last time, should fill out the empty space. I will apply auto width, and from here, the text's property has been removed. This text still has it remaining, so we will click on this as well. Then we would want this particular space where this empty area is located to align perfectly with our text. So we will set the width property to a hug state, and in this manner our empty space will be completely removed. Similarly, for the height, our empty space will also be removed. Then I'm going to expand this one more time. We'll be taking out the unfixed states. When I expand this, our unfixed states will automatically be converted into fixed states. Next, over here, you have the alignment options here. Currently, if you observe, the alignment is set to the top left, and then this one is positioned towards the middle top, and this one is towards the right top. Similarly, this option places it in the center. You can also place it at the bottom, or in the center bottom, or even at the left bottom. For now, I'll keep it in the center and proceed to explain the next feature. For now, so if we hover over this, what is this 12 that's appearing? And this 12 is our gap. What is the gap between these two? And we can adjust that gap from here. We can adjust the padding that we have. From here, I will navigate to the border section and observe that we currently have a padding value of 16, and this particular padding value can be easily adjusted, either increased or decreased. So what we want to achieve with our padding, for instance, is to have the width set to a hug state. However, instead of that, I will simply set this value to 0 for now. When I set its width to hug content right now, it gets completely squeezed, compressed. Its borders become very tight, closing in right with the text.
So I would prefer that instead of this, there should be a little bit of padding on the left and right, a bit of spacing. For that, at a quadrant, I'll just apply a little bit of padding, and even after I applied the padding, it's still in a hug state, our T. One important thing to note here is, and secondly, the padding has indeed been applied, and because of this padding, we now have some space on both the left and right sides. Similarly, we can add padding for the top and bottom, and in this way we can control the gap padding as well as the padding for the left and right sides, and also the padding for the top and bottom. So this is our entire major portion related to this, specifically concerning auto layout and how we organize various elements within it. But further, we will also be looking at this in the component section, observing how elements are organized. Even within the style guide option in that particular portion, we will be examining how we arrange things using auto layout. And the very next property we have, of course, is clip content. We can explain this as follows. For example, even though I've explained that when we create the effects in our style guide, we can enable and disable them to utilize our effect. So this major portion we will be covering within the style guide itself, including fill, stroke, and effects. We will also create styles and look at their different properties together. And lastly, one thing is that we can take any of our own. For example, we have this shape. We can export that, and finally we have this option. If we click on it, the export option will also become available to us. So from here we can also review it prior to export, and then we can convert it to JPEG, PNG, and also to SVG and PDF formats. And we can of course adjust the size and other parameters. And then if it's an image or a specific frame of ours, for example, if it's intended for a portfolio or to be presented to a client, or if the frame is to be utilized for reference purposes, then we can easily export all of these from this section. And now I'll again explain some shortcut keys. Of course, we zoom in by pressing Ctrl and scrolling up, and zoom out by pressing Ctrl and scrolling down with the scroll wheel. And sorry for that, I should have explained this at the start, but I guess if you're already accustomed to using Photoshop or Illustrator, and this shouldn't be too big a problem, and it's not particularly difficult either. I just wanted to do this to provide some information just once. And next, if we look, there's quite a lot of content in our canvas right now. So we want to make sure we cover the maximum content possible. We want this frame, all the visibility we have, the canvas, all the things we have to be clearly visible. To press CIF, I'll say, so for that we will press Shift +1, and then all the content that we have created, the frame will shift to encompass it, covering all the entirety of all the frames. And then, for example, if we want only this specific frame, the one we have currently selected, to move directly onto our view, then we will press Shift +2. So would you soup with all the parts we've selected. For example, if we've chosen multiple, our selection will be based on that view, considering all the selections we've made. So these were some shortcut keys that we'll normally be utilizing. And besides these, some properties that we'll utilize, I'll click on a frame and then we'll right click. So we will right click on this frame, so specifically within the intersection of the frame. If we try to do it outside, either above or below, then naturally these options will not be available to us. And once we right click, you'll see that these properties are all listed out for us. And within these properties, we will be covering various different portions, and we will be looking at many different things. Within this, we will be utilizing various elements throughout the course, and then we will be examining each of them one by one. And of course, if you intend to move around without zooming out, you can simply use your scroll wheel to navigate up and down. If you need to move horizontally, just press and hold the Shift key, and you'll be able to move left and right across the screen. And so I guess largely all the components and tools we're utilizing in this course portion, I think we've covered them all. And next, after this, we will of course move on to the main course. Thank you. Hello and welcome.
इस सेक्शन के अंदर हम जो फिग्मा से रिलेटेड है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम फिग्मा के कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो उसके हम यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैंने अपना फिग्मा को ओपन किया हुआ है और हमारे पास सबसे पहले जो मेजर पोर्शन विजिबल है हमारे पास, वो हमारे पास कैनवास का है। अगर मैं राइट क्लिक करके शो एंड हाइड पे यूआई पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हम सबसे पहले जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं अपने कैनवास को, और यहाँ तक जो है वो हमारा जो है मैक्सिमम कैनवास का जो है वो विजिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमें अदर देन के हमें लेफ्ट राइट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और हायरार्की के हैं जिनको फर्दर ऑन मैं इन शॉर्ट के एक्सप्लेन करूँगा। हमें अगर अपने पास एक्सपेंड करना है अपने व्यू को, अपने कैनवास को, तो हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके अगेन शो एंड हाइड यूआई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूआई जितनी भी है हमारे पास लेफ्ट राइट की वो वापस आ जाएगी। और सबसे पहले अगर लेफ़्ट वाले पोर्शन पे यूआई पे फोकस करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टॉप पर ऑफ कोर्स फाइल का नेम लिखा आ रहा है जो कि हमारे पास टैब के अंदर भी विजिबल है, तो यहाँ पर हम फाइल का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक फाइल का एक एसेट्स का, और करंटली हम फाइल्स वाले सेक्शन के अंदर हैं। और फाइल के सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास पेजेस का पेजेस से रिलेटेड सेक्शन आता है और पेजेस के अंदर जो है हमने डिफरेंट अपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। इन 3 पेजेस के ऊपर हम फर्दर ऑन कोर्स के अंदर काम कर रहे होंगे। और ये जो है ये जस्ट इस सेक्शन के लिए मैंने इस पेज को क्रिएट किया ताकि हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और टूल को यूज़ कर सकें और इंट्रोडक्शन ले सकें उनका। तो पेजेस हमारे पास डिफरेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट अपनी सेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फर्दर सो ऑन। और इस तरह से जो है हम पेज जो है वो प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे एज सिंपल एज दैट है और क्लिक करके हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास एसेट्स का है तो हमारे पास जो है हम लाइब्रेरीज जो हैं वो डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर ऑन जब हम अपने पास कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे तो देन हम इस एसेट्स वाली टैब को भी ऑफकोर्स कोर्स के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो एसेट्स वाली टैब्स पे ये इसका एडवांटेज हमें यहाँ पर ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं तो हम यहाँ पर कंपोनेंट को सर्च करते हैं और कंपोनेंट देन हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैंने बटन सर्च किया है तो क्योंकि हम इन फ्यूचर इस कोर्स के अंदर जो है बटन्स क्रिएट करेंगे और ये बटन जो है हमारे पास क्रिएट है इसको ड्रैग करके यहाँ पर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इस ऐसा टैब्स का जो है एडवांटेज हमारे पास ये होगा। और इसके अलावा जो है हम इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, इसके अलावा अगर जब हम एक अदर देन जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किए हैं और हमारी जो यूआई किट है हम उसके अलावा अगर कोई लाइब्रेरीज एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो हम देन उनको भी इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगेन फाइल वाले सेक्शन पे दोबारा आऊँगा और यहाँ पर पेजेस से बॉटम में जो हमारे नेक्स्ट हमारे पास बनता है इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, नेक्स्ट हमारे पास जो अंडर फाइल जो है हमारे पास ऑप्शन बनता है वो हमारे पास लेयर्स का है। तो लेयर्स हमारे पास एक हायरार्की का सिस्टम है जिसमें जो है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं देन उनके नेस्टेड एलिमेंट्स हैं तो वो सारे जो है हायरार्की के अंदर विजिबल होते हैं। तो इसको जो है थोड़ी सी डिटेल में मज़ीद समझते हैं जब हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे। और अगर मैं अब मिड सेक्शन में हूँ और मिड बॉटम में अगर हम देखें तो करंटली हमारे पास जितने भी टूल्स है टूल किट है हमारे पास टूल जो है जितने भी वो यहाँ पर हमारे पास बॉटम में विजिबल है। सबसे पहले तो हमारे पास सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल के अलावा जो है हमारे पास सिलेक्शन टूल के सेक्शन में हमारे पास मूव का और हैंड का ऑप्शन है। और मूव टूल से हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो मूव करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में से हमारे पास जो है फ्रेम है सेक्शन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो देन इसके ऊपर दोबारा आएंगे। हमारे पास फ्रेम्स हैं और हमारे पास सेक्शंस हैं। मेजरली हम फ्रेम्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि हमने ऑटो लेआउट अप्लाई करना होता है और ऑटो लेआउट जो है इन शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन फ्यूचर। और हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन हमारे पास जो मेजर फ्रेम्स हैं जितने भी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सेक्शन को यूटिलाइज करते हैं। और स्लाइस जो है हमारे पास जो है वो जो है सबसे कम इनमें से यूटिलाइज होने वाला टूल है और इसको फिलहाल के लिए हम स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो क्रिएट करने के लिए पॉलीगॉन्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है शेप्स है। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल है, लाइन है, एरो है, एलिप्स है, पॉलीगॉन टूल है और स्टार है और एंड में ऑफ कोर्स हमारे पास जो है इमेज को इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। और इस तरह से जो है हम इन पॉलीगॉन टूल्स को जो है वो पॉलीगॉन शेप्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेन टूल है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास पेन और पेंसिल टूल है। इसको फर्दर ऑन इन शॉर्ट पीरियड हम आगे फ्यूचर में भी देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को एक्टिव कर सकते हैं हम टी से भी ऑफ कोर्स, और टी से जो है हम एक्टिव करके कोई भी टेक्स्ट जो है उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए एक टूल है, और हमारे पास कमेंट्स के लिए है, और देन लास्ट में हमारे पास प्लगइन्स के लिए है, जिसमें हम डिफरेंट प्लगइन्स को, एसेट्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर फ्रेम है, और फ्रेम का सेक्शन में जो है हमारे पास जो है फ्रेम यहाँ पर एफ से है पॉइंटेड, कि हम शॉर्टकट की एफ कर सकते हैं। सेक्शंस को ऑफ कोर्स अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे, और स्लाइस को तो वैसे भी हमने, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हम कम ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेम्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, या इवन हम F की प्रेस करें तो तब भी ये टूल हमारे पास एक्टिव हो जाता है। तो मैं F की प्रेस करूँगा और ये टूल हमारे पास एक्टिव हो गया। अभी राइट हैंड साइड पे देखें तो ऑलरेडी जो प्री एक तरह से डिफाइंड रेजोल्यूशंस के साथ जो है, फॉर एग्जांपल आईफोन 17 की हैं, आईफोन 16 की हैं, तो हमारे पास लिस्टेड हैं, और इन जो रेजोल्यूशन को है हम जो इनके ऊपर क्लिक करके उन रेजोल्यूशन मोबाइल्स की रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन 17 पे ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये जो रेजोल्यूशन आईफोन 17 की होगी वो हमारे पास जो है उस साइज़ का फ्रेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर देखेंगे तो हायरार्की जो है वो लेयर्स की, उसमें हायरार्की जो है वो क्रिएट होगी, और हमारे पास एक फ्रेम हो गया। फ्रेम का जो आइकन है वो हमारे पास ये होगा, और उसके ऊपर अगर होवर करें तो तभी फ्रेम लिखा हुआ आएगा। और सिमिलरली मैं अंडू करूँगा, और अगर F प्रेस करके फ्रेम टूल को मैं अलग से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट टैबलेट्स के लिए भी ऑप्शन है हमारे पास ऑफ कोर्स, देन डेस्कटॉप के लिए भी ऑप्शन है। सिमिलरली हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास फ्रेम जो है क्रिएट होते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने कस्टम फ्रेम क्रिएट करना है, मैं अगेन फ्रेम टूल पे आ जाऊँगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फ्रेम टूल के लिए ऑप्शन है तो हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और ड्रैग अगर हमने विड्थ और हाइट में उसको कांस्टेंट रखना है और यूनिफॉर्मली उसको एक्सपेंड करना है तो हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, जिससे लेफ़्ट और राइट की तरफ जो है लेफ़्ट और बॉटम, या आप कह लें हाइट और विड्थ में जो है वो यूनिफॉर्म जो एक्सपेंड करेगा और स्क्वायर फॉर्म में होगा ऑफ कोर्स। और अगर फॉर एग्जांपल मैं लेंथ जो है वो विड्थ जो है वो कम रखना चाह रहा हूँ, हाइट इंक्रीज रखना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से हम मैनुअली जो है इसको एडजस्ट करते हैं। नीचे टॉप बॉटम में हमारे पास जो है ये रेजोल्यूशन हमारे पास लिखी हुई आ रही है, और इसको इवन फ्रेम क्रिएट करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में से भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रेम टूल्स के साथ जो है वो वर्क करते हैं, और फ्रेम टूल से हम इस तरह से फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। और देन जो है हमारे पास जो है सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से देन उसको मैं अब एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद। सिलेक्शन टूल में हमारे पास किसी भी हमारे पास जो फ्रेम है उसको मूव करने के लिए जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं, और अभी के लिए मैं ऑफकोर्स फ्रेम को जो है वो सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है हमारे पास हैंड टूल है। तो हैंड टूल में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम फ्रेम को मूव करें, हम कैनवास को जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और अब मैं कैनवा को जो है मूव कर रहा हूँ। तो मैं एक और फ्रेम ले लूँगा, देन उससे जो है वो एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए देखें तो दो फ्रेम जो है साइड बाय साइड है, इनको मैं सेंट्रल कर लूँगा। और अभी के लिए देखें तो मैं एक फ्रेम को जो है ड्रैग करके सिलेक्शन टूल की, आप मूव टूल की वजह से मदद से मूव कर रहा हूँ। और देन जो है हमारे पास जो हैंड टूल है, जिसको हम शॉर्ट हैंड ये शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम स्पेस बार प्रेस करें तो तब इसको एक्टिव कर सकते हैं। जब तक मैंने इसको प्रेस करके रखा है हमारे पास ये वाला टूल जो है एक्टिव है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो हमारे पास पूरा कैनवास जो है, कैनवास है वो मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से जो है हम इसको मूव कर सकते हैं, और एक फ्रेम को मूव करना है तो उसके लिए हम मूव टूल यूज़ करेंगे, और शार्ट पीरियड के लिए जो एक्टिव करना है हमने स्पेस बार प्रेस करके हम हैंड टूल को एक्टिव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले सारे टूल्स कवर होंगे। देन हमारे पास लास्ट में एक स्क्वेयर टूल बचता है, जिसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो है उसको एक्टिव भी कर सकते हैं के की प्रेस करके, शॉर्टकट की। इसको स्केल, ये हमारे पास जो है फ्रेम्स को स्केल करने के लिए, यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए मदद हमारे पास काम आता है। फॉर एग्जांपल हमें मूव टूल से अगर सिलेक्शन करें तो ऑफ कोर्स आउटर मोस्ट जो सेक्शन होगा हमारे पास उसकी विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो जिनको फ्रेम ने कवर कर रखे हैं, फ्रेम के अंदर जो है डिफरेंट वो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, बटन्स यूज़ हुए हैं, फॉर्म, इनपुट, फर्दर सो ऑन, इवन इमेजेस जो है वो यूटिलाइज हुई हैं। तो हम फ्रेम टूल्स की मदद से जब इसको स्केल करेंगे तो ऑफकोर्स आउटर मोस्ट सेक्शन जो हमारा होगा वो स्केल हो रहेगा। लेकिन इंस्टेड फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं कि सब के सब फ्रेम के एलिमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद हैं और आउटर जो फ्रेम है वो भी खुद भी वो स्केल करे, तो हम स्केल टूल के थ्रू जो है उसको स्केल करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्लली मेजर चीज़ों के लिए हम स्केल टूल ही यूज़ कर रहे होते हैं स्केल करने के लिए, इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन टूल के थ्रू जो है हम उसको स्केल करें। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल हाइट करनी है वो इस तरह से भी की जा सकती है। आप किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो
उसको रख के, ठीक है। अभी विड्थ के अंदर चेंजिंग ज़्यादा है, हाइट में चेंजिंग ज़्यादा है, या आप जो है वो यूनिफॉर्मली जो है इस तरह से भी कर सकते हैं इसको स्केल टूल की मदद से। और दूसरा स्केल टूल में हम जब एक्टिव होगा हमारे पास, हम जो है मैनुअली भी यहाँ से जो है विड्थ और हाइट सेट करेंगे तो ऑफकोर्स इनर एलिमेंट्स की जो है वो सेट हो जाएगी। और ऑफकोर्स जो हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो होगी वो लॉक्ड होगी। और एक विड्थ को या हाइट को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करने से दूसरी वैल्यू भी अफेक्ट हो रही होगी हमारे पास सिमिलरली। और इस तरह से जो है ये स्केल टूल है। स्केल टूल को डीएक्टिवेट करने के लिए या डिसेबल या दूसरे मूव टूल पे जाने के लिए अगर इस पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं क्लोज करने से। और अभी दोबारा हम सिलेक्शन टूल पे आ गए हैं, या जब हम स्केल टूल के ऊपर होंगे तो हम वी प्रेस करेंगे तो अगेन हम जो है वी प्रेस करेंगे तो अगेन हम जो है वो फ्रेम टूल के ऊपर आ गए, मूव टूल के ऊपर सॉरी। तो इस तरह से मूव टूल्स हैंड और स्केल कवर होते हैं। और देन हमारे पास सेक्शन को एक दफ़ा मैं दिखा दूंगा। सेक्शन में ये कि मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा तो हमारे पास जो मेजर हमने मल्टीपल फ्रेम क्रिएट किए हुए हैं वो हमारे सेक्शन के पोर्शन में आ गए हैं। उन इस सेक्शन को मैं फॉर एग्जांपल नाम दे सकता हूँ कि हमारे ये लॉगिन से रिलेटेड जो है सारे फ्रेम्स हैं। और सिमिलरली जब हमारे पास लार्ज स्केल जो फ्रेम्स हम क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास नंबर्स ऑफ फ्रेम्स हो जाते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सिलेक्शन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। मैं इसको अनडू कर लूँगा। देन हमारे पास जो है स्लाइस ऑफ कोर्स इसमें यूटिलाइज नहीं कर रहे ऑफ कोर्स कोर्स में, तो उस कोर्स का स्कोप नहीं है। और देन नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल टूल्स हैं और ये सिमिलरली ऑलमोस्ट वर्क करेंगे। बेसिक शेप जो मोस्टली प्रॉब्ली हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को मैं ड्रैग करूँगा और रेक्टेंगल जो है हम स्क्वायर बना सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने फ्रेम को क्रिएट किया था। या हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको एक्सपेंड और जो है वो श्रिंक कर सकते हैं इस तरह से। और ये यूनिफॉर्मली कर रहा होगा शिफ्ट के साथ। और अगर हम लेफ्ट विड्थ में जो हाइट में इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, विड्थ में इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। और एक दफ़ा हमने फॉर एग्जांपल कर दिया और देन हम चाह रहे हैं कि इस विड्थ और हाइट की बेस पे अगर हम इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम ऑफकोर्स एस्पेक्ट रेशियो को भी लॉक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमें शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी और यूनिफॉर्मली जो है एक्सपेंशन जो है हमारे पास होगी एस्पेक्ट रेशियो लॉक होने की वजह से। और नेक्स्ट जो है ऑफ कोर्स अभी क्योंकि हमारे पास ये पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल और फ्रेम में एक डिफरेंस होगा। मैं फ्रेम को भी ले लेता हूँ, आप की प्रेस करूँगा और फ्रेम एक क्रिएट कर लूँगा हमारे पास। अभी के लिए देखने के लिए अगर इसको और उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर उधर देन के आप हायरार्की में देखें और हायरार्की में यहाँ पर हमारे पास विजिबल है कि हमारे पास फ्रेम है, ये हमारे पास जो है वो ये फ्रेम है हमारे पास। उसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास फ्रेम भी लिस्टेड होगा। देन हमारे पास रेक्टेंगल है जो कि पॉलीगोनल टूल है और वो शेप है। और उसके ऊपर होवर करने से रेक्टेंगल भी विजिबल होगा। अब इनमें एक और डिफरेंस ये भी होगा आपको क्योंकि फ्रेम जो है हमारे पास ऑटो लेआउट्स जो है वो अप्लाई करने के लिए होते हैं। इन शॉर्ट पीरियड में उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास ये ऑटो लेट क्या है। तो फ्रेम जो है हमारे पास ऑटो लेआउट को यूटिलाइज़ करने के लिए यूटिलाइज होता है, जबकि हम रेक्टेंगल को जो है वो शेप्स डिफरेंट शेप्स के जो है वो क्रिएट करने के लिए डिफरेंट जो है सेक्शन को शेप देने के लिए या इस तरह से हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पर भी हमारे विजुअल जो है वो हमने क्रिएट करना होता है तो हम जो है आइकन्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पर हम मेजरली रेक्टेंगल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो जिस पॉइंट पे हमें ऑफ कोर्स ऑटो लेआउट यूज़ नहीं करना या ऑर्गेनाइज नहीं करना चीज़ों को उस पॉइंट पे, और सिर्फ शेप्स जो हैं वो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें इमेज की जो है वो शेप जो है वो सर्कुलर फॉर्म में चाहिए तो हम रेक्टेंगल को यूज़ करके कॉर्नर रेडियस हम उसका डिक्रीज़ करके फॉर एग्जांपल जो है उसकी सर्कुलर फॉर्म में शेप ले आते हैं और देन जो है फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक इमेज प्लेस करने के लिए फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जिसमें हमारे पास ऑटो लेआउट हमें ना करना हो, जस्ट जो है वो शेप देनी हो किसी चीज़ को या हमें आइकन्स क्रिएट करनी हो तो वहाँ उस पॉइंट के ऊपर हम रेक्टेंगल टूल्स जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट जो ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन करूँगा वो ये है कि हमारे पास फ्रेम है। जब फ्रेम सेलेक्ट हुआ तो इस पर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इंटर प्रेस करने से आपको नो मोर चिल्ड्रन टू सेलेक्ट लिखा है। और जब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये जो मोड एक्टिव हो गया है, ये एक तरह से वेक्टर जो है आप इसको कह सकते हैं, ये एडिट मोड ओपन हो गया हमारे पास सब। और इसकी जितने भी शेप्स हैं उनको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं ना कि अदर अनलाइक हमारे पास जैसे फ्रेम में था, फ्रेम की जो हम शेप्स हैं उसको जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मॉडिफाई करने से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ले लूँगा
और इस पॉइंट को जो है मैं इस तरह से मूव करना स्टार्ट करूँगा। और इस तरह से हम रेक्टेंगल जो है, हमारे पास जो रेक्टेंगल थी उसकी शेप को जो है हमने मॉडिफाई कर लिए। हम इन पॉइंट्स को जो है वो मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हमें कोई आइकन क्रिएट करना है तो हम जो है इसकी जो है शेप्स जो है इस तरह से चेंज कर लेंगे और अपने पास जो है आइकन एक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से हम। और रेक्टेंगल टूल इस तरह से हमारे पास यूटिलाइज होगा। और ऑफकोर्स ये एडिट मोड इसमें इनेबल हो सकता है जबकि फ्रेम में इनेबल नहीं होता। और ये सेकंड इसमें से डिफरेंस था। देन जब हमने एक्टिव किया हुआ अपने एडिट मोड में तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अगेन विजिबल हो गए। हमारे ओरिजिनल टूल बॉक्स टूल किट जो थी या टूल बॉक्स कह लें उसके ऊपर हमारे पास एक शॉर्ट जो है वो ओपन हो गया। इसमें फर्स्ट जो है वो सेक्शन टूल है। देन जो है हमारे पास लेसो का होगा। लेसो में हम यूजुअली जो है हम सिलेक्शन जो है उस तरह से कर सकते हैं। मल्टी सिलेक्शन है तो हम इस तरह से लेसो के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल को मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसी की कॉपी ले लेते हैं। और कॉपी लेने के लिए हमारे पास या तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी उसी के ऊपर प्लेस हो गई है। तो जो न्यू थी तो हम इसको ड्रैग करके अलग से कर सकते हैं या मैं अंडू करूँगा। और अगर मुझे इसकी कॉपी लेनी है तो मैं अल्टरनेट की को प्रेस करके रखूँगा डाउन में और ड्रैग करूँगा माउस की मदद से एक न्यू शेप को। और इस तरह से हम जो है इजीली जो है न्यू शेप को क्रिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड की है, ये शॉर्टकट की है हमारे पास। अब शेप बिल्डर टूल को मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस शेप को जो है इसके साथ थोड़ा सा जो मर्ज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर अब हम देखें तो ये और ये शेप जो है वो अलग से एग्जिस्ट कर रही हैं। और लेट मी अनडू। और हम चाह रहे हैं कि अभी के लिए जो है ये एक रेक्टेंगल में दो पार्ट्स हैं तो हम चाहते हैं ये है कि हम इसको आउटसाइड दिस के इसको डुप्लीकेट करें। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर लूँगा या आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा और देन मैं इसको रोटेट करूँगा और उसके साथ अलाइन कर लेंगे। अभी के लिए देखें तो हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं और दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंटली प्लेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि एक ही जो है ये शेप बन जाए तो एक ही जो है वो हमारे पास हो। उधर सिलेक्शन में हमारे पास एक ही दफ़ा आ रही हो। तो उसके लिए एक पॉइंट तो ये है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद या तो फ्रेम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या मोस्ट प्रॉब्ली हम जो यूटिलाइज़ करते हैं वो इंस्टेंट, क्योंकि हमने इनको कोई ऑटो लेआउट नहीं देना तो हम जहाँ पर ऑटो लेआउट नहीं देना तो और चीज़ों को किसी अंडर किसी ग्रुप के ऑर्गेनाइज करने हैं तो हम जो है उसको ग्रुप सिलेक्शन में ले आते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन आ रही है या कंट्रोल जी हम प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम हमारे एक ग्रुप के अंदर जो है हमारा एक आउटर ग्रुप है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से और उस ग्रुप के अंदर हमारी ये शेप आ रही है। ये फर्स्ट तरीका था। और इसी ग्रुप को या फ्रेम को हमें जब रिमूव करना होता है तो हम कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास जो हमारा ग्रुप है वो ख़त्म हो गया और वो क्लोज हो चुका है हमारे पास। और हमारे जो पॉलीगॉन शेप्स थी रेक्टेंगल वाली दोनों वो देन अगेन प्लेस्ड हैं। और इनको अगर हम मूव करेंगे तो ये लादा से अब शेप्स हैं किसी ग्रुप के अंडर नहीं, और तो फिर ये ऑफकोर्स कंबाइन नहीं रहेंगी। और सेकंड ऑफकोर्स क्योंकि हम शेप बिल्डर टूल की बात कर रहे थे तो मैं इन दोनों को अब सेलेक्ट कर लूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। और हमारे पास क्योंकि अब शेप बिल्डर टूल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इसको बाय द वे एम की से प्रेस करते हैं मैं अगेन वी से अगेन इसका सिलेक्शन टूल प्रेस होगा और एम से जो है हमारे पास शेप बिल्डर टूल जो है वो सिलेक्ट होता है। अब शेप बिल्डर टूल हमारे पास ये करेगा कि हमारे पास इन शेप्स को जो है हम मर्ज कर देते हैं। उसको उससे एडवांटेज हमारे पास ये होगा कि हमारे पास दो रेक्टेंगल्स होने की बजाय एक ही रेक्टेंगल जो है हमारे पास होगी। और उससे जो है फिर हम जो है वो उसको जो है वो प्लेस करना, उसको ऑर्गेनाइज करना जो है हमारे लिए ईजी रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये शेप्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव होंगी और इसके बाद ये इन शेप्स को अनडू नहीं किया जा सकता और एक दफ़ा ये कंबाइन होगी। तो और कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हमारे पास प्लस का जो है वो साइन का आ रहा है। डिलीट करने के लिए आप अल्टरनेट प्रेस करेंगे तो ये रिमूव कर रहा है। मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये सेक्शन जो है वो रिमूव हो जाए। और फॉर एग्जांपल हमें मिड पॉइंट को रिमूव करना था जो कि मर्जिंग पॉइंट है और इसको अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पॉइंट जो है हमारे पास रिमूव हो गया। लेकिन हमें इस पूरी शेप को कंबाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करते हुए जब ये लाइन है इसको डिफरेंट सेक्शंस में से पास करूँगा। जो जिन सेक्शंस में से मैं चारों की कम्बिनेशन इनका निकल जो है वो विजिबल हो और कंबाइन हो। तो इन तीनों चारों सिलेक्शंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं जब जो है क्लिक करके मैं छोड़ दूंगा तो हमारे पास जो है एक ही अब रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। लास्ट में हमारे पास दो रेक्टेंगल थी और अब एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया हमारे पास। और उसमें डिफरेंट अब पॉइंट्स जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो हमारे पास रिमूव हो चुके हैं। और इस तरह से मैं जब एस्केप की प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास अगेन एक शेप है। लेकिन एज मैंने प्रीवियसली बताया कि हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव है, इसको हम अगेन जो है उसी पॉइंट पे अगर करना होगा क्योंकि हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स अब एक ही में कंबाइन हो चुकी हैं
और अगर इनको हमें इलादा से करना होगा, इनको अलग-अलग करना होगा, तो अगेन इन शेप्स को हमें जो है वो कट करना पड़ेगा, देन ही हम इनको अलग कर सकते हैं। अब ये अलग से दो जो रेक्टेंगल्स हैं वो नहीं रही। और उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ को उनको देखते हैं। ये हमारे पास जो फिल टूल है, और फिल टूल जो है हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास फिल्स हैं उनको जो है वो अप्लाई करने के लिए काम आता है। तो अदर देन हम इसको इधर से अप्लाई करें, हम यूजुअली जो है हमारी राइट हैंड पे जो हमारे पास विंडो है यूआई की, वहाँ के फिल के ऑप्शन में से हम उसको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम उसका कलर वगैरह चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेन टूल है, और पेन टूल हमारे पास काम आता है। फॉर एग्जांपल हमारे हमारे पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट को मैं क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करूं, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है हैंडल्स जो है क्रिएट हो जाएंगे, और हैंडल्स जो है हमारे पास कंट्रोल कर सकते हैं उसकी शेप को लेफ्ट और राइट की। और जितना क्लोज होगा ऑफकोर्स पॉइंट उतना शार्प होगा, और जितना दूर होंगे ऑफकोर्स जो है वो हमारे पास जो है बैंड जो उतना इंक्रीज़ करेगा, उतना ही जो है वो कॉर्नर जो है सर्कुलर फॉर्म की जो है वो जो है इमेज होगी। और जितना हम क्लोज रखेंगे ऑफकोर्स जो है उतना ही हमारे पास शार्प जो है पॉइंट रहेगा, शार्प शेप रहेगी। और फॉर एग्जांपल हम इसको पॉइंट को ख़त्म करना चाहें, तो मैं इस पॉइंट को ड्रैग करके इसके पॉइंट के ऊपर ले आऊँगा और इस ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बैंड हमने क्रिएट किया था वो हमारे पास ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास कट टूल है, उसको एक्स से भी एक्टिव कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कट करना चाह रहे हैं इस शेप से, ठीक है। और जो ही हमने कट करके इसको ड्रैग किया, लेट मी अनडू, और इस पॉइंट को हमने कट करके जो है वो ड्रैग किया, तो हमारे पास जो फिल थी वो कंटिन्यूस नहीं रही। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जो है वो अब कंबाइन नहीं रहे, और उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है ये फिल में अब कोई कलर जो है जो कि हमारे पास अप्लाइड था वो विजिबल नहीं रहा। तो इस कट टूल की मदद से हम जो है शेप्स को कट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, और इस शेप को ज्वाइन करने के लिए अगेन अगर हम इस शेप को ज्वाइन करना है किसी न्यू पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम जो है पेन टूल ले लेंगे, पी से मैं जो है प्रेस करूँगा, अगेन हम पेन टूल के ऊपर आ गए, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन इसी पॉइंट पे थी, और इसको क्लिक करके मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, और इस तरह से अगेन हमारी जो शेप है वो ज्वाइन हो चुकी है, और हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट वो था जो हमने कट किया हुआ था। तो इस तरह से जो है हमने नया पॉइंट एक जो है वो कट करके निकाल लिया। देन हमारे पास जो टूल है वो हमारी जो है स्ट्रोक सेट करने के लिए, और अगेन हम सिमिलरली जैसे हम फिल के लिए कर रहे थे, तो हम अगेन इंस्टेड के हम यहाँ पर स्ट्रोक को जो है वो कंट्रोल कर रहे हो, मैनुअली जो है यूजुअली मैनुअली जो है यहाँ से स्ट्रोक को कंट्रोल कर रहे होते हैं इंस्टेड। तो इस तरह से हम स्ट्रोक को भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक को एक्सपेंड कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने शेप टूल्स को जो है ये एडिट ऑप्शंस को कह लें, या वेक्टर जो इनेबल जो है हमारे ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। और escape की जो है प्रेस करके या क्लोज पे मैं क्लिक करूँगा, तो ऑफकोर्स ये हमारे पास विंडो क्लोज हो जाएगी, और इसको अगेन एक्टिव करने के लिए हम इंटर ही प्रेस करेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, लाइन की होती हैं हमारे पास, उसमें भी अगेन हमारे पास जो है डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको मैं इन शॉर्ट अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल जो है वो हम थोड़ा सा इन शॉर्ट देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रोक को देख लेते हैं। स्ट्रोक जो है किसी भी पॉइंट के आउटलाइन पे जो है हमारे पास जो बॉर्डर होता है वो हमारे पास स्ट्रोक है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर ब्लैक की स्ट्रोक अप्लाई की थी, तो ये हमारे पास बॉर्डर है, किसी भी जो वेक्टर शेप है हमारे पास, ये उसका कॉर्नर जितना भी होगा हमारे पास वो हमारे जो है स्ट्रोक लाएगी। तो सिमिलरली मैंने लाइन टूल लिया था, इसमें आपको कोई क्योंकि कोई फिल नहीं है, तो हमारे पास जो स्ट्रोक होगा, और यहाँ पर हमारे पास उसका कलर है, उसकी ओपेसिटी है, उसकी विजिबिलिटी को या इवन उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। और ऑफकोर्स यहाँ उसकी पोजीशन है, और पोजीशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वेट के बाद। और वेट जो है हमारे पास हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कितनी उसमें कितना विड्थ है या हाइट के, अगर उस फॉर्म में हमने शेप को रखा हुआ है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो वो कितनी हाइट और उसमें है, और इसकी मोटाई कितनी है, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। और अब अगर मैं सेंटर को एक्सप्लेन करूँ, तो अभी टॉप पर ये हमारे पास मिडल में लाइन है, इसके टॉप और बॉटम में हमारे पास जो है वो स्केल जो है यूनिफॉर्मली जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है टॉप और बॉटम में। जब मैं इन साइड पे करूँगा, तो ऑफकोर्स जो है इसने शेप अब जो है वो चेंज की। लेट मी सेलेक्ट, और ऑफकोर्स इसको इस चीज़ को जो है समझने के लिए हम इस पे जाएंगे, और अभी के लिए देखेंगे कि आउटलाइन हमारे पास ये वाली है, और जो शेप स्ट्रोक बनी है वो हमारी जो है वो इस शेप के अंदर वाली साइड पे है। तो ऑफकोर्स हमारे पास पोजीशन जो है इनसाइड है, और इसको अगर मैं सेंटर करता हूँ, तो पोजीशन में सेंटर जो है वो अब सेंटर पॉइंट है, और उसमें इनर साइड पे भी आउटर साइड पे दोनों साइड पे हमारे पास जो है स्ट्रोक अप्लाइड है। और हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आउटर साइड पे ही जस्ट हो, तो इस तरह से हम आउटर साइड के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। और लाइन टूल में आपको जो लाइन हमारे जो है पास वेक्टर है,
पॉलीगॉन। तो इसमें जो है हम सिमिलरली जो है सिर्फ स्ट्रोक को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और लास्ट में ऑफकोर्स हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, जो कि इधर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बेटर है इधर उसकी निस्बत। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सिलेक्टेड। और हमारे पास जो है ओके या तो हमारे पास जो है स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट में जो है हमारे पास अभी नन और एंड पॉइंट में भी नन सेलेक्ट हुआ है। तो इसको अगर मैं राउंड करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप्स हैं हमारी, वो जो है वो राउंड शेप्स में हो गई हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट की। तो इस तरह से जो है इनकी शेप्स को जो है वो जो है वो कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसकी शेप जो डिफरेंट चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ एंड जो है मुझे इसका डिफरेंट चाहिए, तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और इस तरह से मैं इसकी शेप जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट जो भी मुझे चाहिए। सेलेक्टेड इसको सिलेक्शन जो है अगर इजीली आप करना चाहें तो ऑफकोर्स यहाँ से भी राके में से भी किया जा सकता है। तो सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट हैं, हमारे पास एरोज हैं, हमारे पास रेक्टेंगल हैं, रिवर्स ट्राइंगल था, सर्कुलर है। तो इनको यूजुअली हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, और यूजुअली हम या तो नन पे रखते हैं या तो हमें अराउंड जो है वो शेप चाहिए होती है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और स्क्वायर जो ऑफ कोर्स सिमिलर टू नान ही वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लाइन टूल को यूटिलाइज करते हैं। देन हमारे पास एरो टूल हैं, ये सिमिलर उसी तरह से वर्क करेंगे। एरो टूल की अगर हम वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो आपको यहाँ पर एंड पॉइंट जो है वो शिफ्टेड है, और यहाँ से हम शफल कर सकते हैं उसको, और उसका जो है वो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास एरो आ गया। आपको सिमिलरली हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स को हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अगेन इस पर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यूनिफॉर्मली स्केल जो है वो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और पॉलीगॉन में हम पॉलीगॉन से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास रेक्टेंगल है, तो देन हम जो है इसमें से अगर रेक्टेंगल्स को काउंट हमने इंक्रीज करके फॉर एग्जांपल हम 4 पे ले जाएं, तो यहाँ पर डायमंड शेप है, इंक्रीज करके जो है हम जो है वो डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर। सर्कुलर टूल में एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा मजीद। उसमें यह है कि हम अगर आर्क के हमारे पास आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करना स्टार्ट करें, तो हम जो है डिफरेंट जो है सर्कल की जो हाफ हमें सर्कल चाहिए फॉर एग्जांपल हम वो क्रिएट कर सकते हैं। हमें 1/3 सर्कल चाहिए वो कर सकते हैं, 3/4 सर्कल चाहिए सॉरी वो कर सकते हैं, 1/3 चाहिए, 1/4 चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और मेजर जो वैल्यू है वहाँ पर यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास गिवन होंगे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेशो को जो है हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस पॉइंट में मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करके जब मैं ले जाऊँगा तो इस तरह से हमारा जो है सर्कल का ये हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमें कोई विजुअल जो है इस तरह से हमें सर्कल को बनाना है, तो जिसमें हमारे पास फिल वगैरह है, तो हम इस तरह से जो है अपने सर्कल को भी क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और सिमिलरली हम पॉलीगॉन टूल के अंदर मैंने जैसे बताया अकाउंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में जो है स्टार्स में भी ऑफकोर्स हम जो है अपने अकाउंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और ऑफकोर्स जो उसका एंगल है उसको जो है वो रेशो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने पास। और लास्ट में ऑफकोर्स इमेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, वहाँ से जो है हम इमेजेस को जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पास। और सिमिलरली जब हम इसको इंटर करेंगे किसी भी शेप को इनमें से, तो हमारे पास जो इनेबल हो रहा है और ऑप्शन उसमें उधर देन हम पेन टूल को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर लेंगे। या एक दफ़ा मैं इसको एस्केप की प्रेस करूँगा और मैनुअली यहाँ से मैं जो है सिलेक्ट करूँगा पेन टूल को। पेन टूल की मदद से भी हम शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मैं एंटर करूँगा और सॉरी मैं इसको राइट पे जो है लास्ट वाले पॉइंट पे करूँगा इसके साथ, क्योंकि अभी तक की जो शेप है वो फिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो जो ही मैं एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये शेप कंप्लीट होगी। अब इसके अंदर हम क्योंकि स्ट्रोक अप्लाइड है अभी के लिए, और इस पॉइंट पे अगर हम फिल पे क्लिक करें तो हमारे पास जो इनर शेप है जितनी उस आउटर कॉर्नर बॉर्डर रेडियस जो भी हम कह लें स्ट्रोक थी, उससे इनर जो शेप है हमारी वो उसके अंदर जितना भी पोर्शन होगा उसको उसमें जितना भी पोर्शन होगा उसको हम फिल कहेंगे, और उसको हम जो है वो एक कलर अप्लाई उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो है फिल होगी जो, और स्ट्रोक जो है हमारे कॉर्नर्स होंगे, हमारे बॉर्डर्स होंगे। तो इस तरह से हमने पेन टूल की मदद से शेप क्रिएट कर ली। इसमें मज़ीद हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जो है वो शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। और आइकन्स हम जो है यूजुअली इसी टूल की मदद से जो वो क्रिएट कर रहे होते हैं, अदर देन इन रेक्टेंगल टूल या लाइन टूल में से या एलिप्स में से हम एलिप्स में से यूज़ कर रहे हो जब। तो एनीवे इस तरह से हमारा ये टूल कवर होता है। और
होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेक्स्ट टूल है, जिसमें हम ऑफकोर्स जो है वो कुछ राइट करें तो हम राइट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स टेक्स्ट का जो है हम डिफरेंट जो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए लिंक्ड है हमारे इन फ्यूचर जो हम स्टाइल्स क्रिएट करेंगे मैं इसको डी अटैच कर लूँगा एक दफ़ा। तो हमारे पास ये मल्टीपल जितने भी हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, तो सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर विजिबल हैं। अगर मैनुअली आप कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो हम डिफरेंट जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। मैं इसको अगेन सेलेक्ट कर लूँगा। ये डिफरेंट वेट्स आ गए हमारे पास, उन वेट्स को हम जो है वो उनके ऊपर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड तक है हमारे पास। देन अगेन हमारे पास ये साइज़ की लिस्ट है और उसको डिफरेंट साइजेस जो है हम सेट कर सकते हैं। और सिलेक्ट किया हम 128 पे करें और ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस आ गई और इन साइज़ को हमने यहाँ से जो है वो चेंज कर लिए। ये अभी के लिए हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू अप्लाइड है और उसकी वैल्यू जो है मैनुअली भी हम सबसे पुट कर सकते हैं। लेट मी शो कि हम इस पर 256 पुट करें, या तो हम इस तरह से मैनुअल जो है वो वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास लाइन हाइट है और लाइन हाइट जो है वो हम डिफरेंट सेट कर सकते हैं। हमारे पास अभी के लिए वेरिएबल्स का आ रहे हैं, तो हम इसको अगर मैनुअली चेंज करना चाहें तो अभी के लिए हम देखते हैं कि इस तरह से हम जो है लाइन की जो हाइट है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अभी के लिए देखें तो जो है वो 0 पे चली गई है और यहाँ पर जो है ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, हाइट को इंक्रीज कर लिया। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ऑटो रखना चाहते हैं कि यहाँ मैनुअली जो है वो, तो हम इस वैल्यू को ख़त्म करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो पे हो जाएगी और इसकी जो हाइट है वो अंदर रिलेटेड टेक्स्ट या उसके फ़ॉन्ट वेट के ऊपर, साइज़ के ऊपर जो है डिपेंडेंट होगी और लाइन हाइट ऑटोमेटिकली हिसाब से एडजस्ट हो रही होगी। सिमिलरली स्पेसिंग जो है हमारे जो है यहाँ से कंट्रोल होती है। लाइन स्पेसिंग हम लेटर स्पेसिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और मैनुअली इंटर बैकस्पेस प्रेस करके इंटर करेंगे तो -5 पे आए तो आई गेस इसको मैनुअली जो है वो पुट कर लेंगे हम। यहाँ पर हमें 0 चाहिए थी, हमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए थी और ये ऑटो इसके लिए ये 0 वैल्यू होगी। और लास्ट में ऑफकोर्स अलाइनमेंट होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो उनकी अलाइनमेंट हम लेफ़्ट कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। और सिमिलरली जब हमारे पास जो है लाइन हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा लेट मी इंक्रीज इट फर्दर, क्या हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अभी के लिए देखें तो सेंटर में है, तो इसको मज़ीद जो है हम अलाइन कर सकते हैं। हमारे सेंटर में बॉटम में करना चाहिए वो कर सकते हैं, टॉप पर करना चाहिए उस तरह से अलाइन कर सकते हैं उसको। और एक चीज़ ये रिसाइजिंग में मैं नोट कराऊंगा, अभी के लिए देखें तो हमारी जो हाइट है वो उसको जो है वो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर चाह रहे हैं कि हम कि जितनी ये हमारे पास जो है, इसको फर्स्ट बार मैं लेफ़्ट की तरफ कर लूँगा। हमारे पास ये जो राइट के अंदर स्पेसिंग है ये हमारे पास जो है वो फिल रही है। ये जो हमारे पास आउटर बॉर्डर है वो अटैच रहे अपने जो टेक्स्ट है उसके एंड पॉइंट पे, जो हमारे पास लेटर एच है तो उसके साथ मर्ज हो, एक्स्ट्रा स्पेसिंग यहाँ पर ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑटो अपनी विड्थ को जो है अप्लाई करते हैं। जो ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी वो अप्लाइड हो जाएगी। और सिमिलरली हाइट में अगर है हमारे पास तो हम चाह रहे हैं कि हाइट जो है वो कर जाए और तो हम हाइट के लिए ऑटो हाइट जो है अप्लाई करते हैं। और जब हम इसको मैनुअली एक्सपेंड कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ये फ्री जो है होगा, फ्री फॉर्म में होगा, तो ये फिक्स साइज़ के अंदर आ जाएगा कि ये साइज़ हमने मैनुअली सेट किया होता है इसके लिए। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इनको खुद एक्सप्लोर करिएगा, ये सिंपल ही है। हम जो केस है वो अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं। टाइटल केस है हमारे पास, सिमिलरली अलाइनमेंट है, डेकोरेशंस हैं, ये सिंपल हैं और इसमें बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम इस तरह से। और इस तरह से हम लेटर वाला जो है वो कवर करते हैं। और यूजुअली हमने अलाइनमेंट जो है इनके ऊपर मेन हमारा फोकस होता है कि अलाइनमेंट जो है हम प्रॉपर कर रहे हो। हमारी जहाँ पर हमें हाइट में अलाइनमेंट चाहिए वहाँ पर हम ऑटो हाइट अप्लाई करें, जहाँ पर हमें ऑटो विड्थ चाहिए वहाँ पर हम ऑटो विड्थ अप्लाई करें। और यहाँ से हम यूजुअली जो है अपने जब हम टाइपोग्राफी क्रिएट करेंगे तो हम अपने जो हम जो क्रिएट करेंगे अपने स्टाइल्स उनको अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पर, इंस्टेड के हम अभी के लिए जैसे इसको मैनुअली कंट्रोल करें। तो इंस्टेड में फॉर एग्जांपल अभी के लिए कोई स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो मेजर पोर्शन प्रॉपर्टीज़ का जो है वो हिडन हो गया और हम स्टाइल के थ्रू जो है इस प्रॉपर्टी को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इसको अनडू कर लूँगा।
और ये हमारे पास कमेंट से रिलेटेड है। कमेंट हम सी से भी एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई कमेंट राइट कर सकते हैं और जो ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये कमेंट आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल एक फाइल के ऊपर डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं या क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं, वो भी कमेंट्स पास कर सकते हैं और उस कमेंट के ऊपर बेसिस पे हम डिफरेंट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये सिंपल था। और लास्ट में हमारे पास प्लगइन है और प्लगइन जो है हम डिफरेंट सर्च करूँगा कि हमारे पास जो आइकन से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं वो लिस्टेड हो जाएँ। तो अभी मुझे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे पास जो है जितनी भी प्लगइन्स थी वो इस दफ़ा लोड हो गई हैं। और उसमें आइकन्स एड जो है काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है हमारे पास, और आइकॉनोफी के अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के भी आइकन्स हैं और सिमिलरली डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आइकन 8 को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ये इंस्टॉल ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। हम रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आइकन 8 की जो प्लगइन है वो हमारे पास लोड हो जाएगी। तो विद इन थोड़ा सा जो है सेकेंड आई गेस हमारे पास लोड हो जाएगी या। तो ये हमारे पास जो है प्लगइन इंस्टॉल होगी और यहाँ से हम डिफरेंट आइकन्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आइकन्स को यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल का मैं सर्च कर लूँगा, एप्पल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एप्पल के जो एप्पल का लोगो भी आ जाएगा और डिफरेंट एप्पल के अलग से जो शेप्स हैं वो भी आ जाएंगे हमारे पास, और डिफरेंट जो रेलिवेंट जो सर्च से रेलिवेंट हमारे पास ऑप्शन हैं वो आइकन्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्लगइन्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक प्लगइन थी हमारे पास। और ऑफ कोर्स हमारे पास ये आइकन, इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं कमेंट को बाय द वे, तो हम जो है उसको जो है डिलीट भी कर सकते हैं। मार्कस जो है वो हम मार्कस रीड करेंगे या रिजॉल्व, और हमारे पास जो है हमारा कमेंट था वो अब हिडन हो चुका है और उसको एज ए रिजॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक एक्सप्लेन करूँगा हमारे पास कि हमारे पास जो है वो ड्रा के भी ऑप्शन है डिज़ाइन का। मेजरली हम डिज़ाइन के ऑप्शन में कर रहे होते हैं, ड्रा का ऑप्शन जो है वो कम ही हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास टैबलेट होने का जो है होना ज़रूरी है, तभी हमें इस पॉइंट का एडवांटेज होगा कि अगर हम कोई चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम इन टूल से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ब्रश टूल भी है हमारे पास सिमिलरली इस तरह से। तो यूजुअली हम इन टूल्स को जो है वो नहीं देख रहे होते हैं, मेजरली हमारा जो पोर्शन होता है हम इसको कवर कर रहे होते हैं डिज़ाइन को। देन हमारे पास जो है डेम मोड आता है और डेम मोड जो है यूजुअली हम डेवलपर्स जो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हमारे पास हमारे फिग्मा फाइल को, और देन वो जो है उस पोर्शन को यूटिलाइज़ करते हैं। हमने मेजरली जो अपना 95 या उससे भी इवन ज़्यादा पोर्शन है वो डिज़ाइन पोर्शन के अंदर ही जो है वो करना है, उससे जो काम करना है उसी पोर्शन के अंदर करना है, इसी सेक्शन के अंदर मोड के अंदर। देन जो हमारे पास एक कैनवा का एक डिफरेंट मोड होगा और उस मोड को जो है हम अभी करंटली देखें। एक तो हम डिज़ाइन सेक्शन के अंदर हैं और डिज़ाइन सेक्शन में भी हम डिज़ाइन पे हैं, और देन हमारे पास प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप जो है हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स को जो है वो अलाइन करने का है, और वो जो है इस टाइम इसका स्कोप नहीं, तो इस पॉइंट को भी फिलहाल के हम स्किप करेंगे। हम डिज़ाइन के ऊपर मेनली फोकस करेंगे अपना, माइट भी इन फ्यूचर हम उस पॉइंट को जो है वो कवर करें। और अभी ऑफ कोर्स अगेन मैं एक दफ़ा लेफ़्ट से अब राइट की तरफ आऊँगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी हम एक दफ़ा देखेंगे। टॉप पर हमारे पास जो है फ्रेम का नेम आ रहा है, उस फ्रेम के नेम को यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं हम कि फ्रेम के नेम को यहाँ पर एडिट करें। कैनवा के अंदर भी एडिट कर सकते हैं, और देन यहाँ पर जो है यहाँ से हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं आपको फ्रेम पे, और ग्रुप पे चेंज कर सकते हैं। देन अगेन हमारे पास जो है डिफरेंट जो लिस्टेड है रेजोल्यूशन वो भी हमारे पास अगेन लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इसी फ्रेम को अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ आईफोन के उसमें रेजोल्यूशन में, तो यहाँ से जो है उसको मैंने जो है वो क्रिएट कर लिया और चेक कर लिया। और लेट मी शो, ओके मैं सिलेक्शन टूल पे वापस आ जाऊँगा एक दफ़ा। ओके ओके तो यहाँ पर जो है हम डिफरेंट एक तो सेट कर सकते हैं नेमिंग के लिए। ऑफकोर्स हमें इसी पॉइंट पे करना है और इस पॉइंट पे करना है, और मैं ज्यूम कर रहा था कि इस पॉइंट पे भी हो जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स इस पॉइंट पे जस्ट जो है हम जितनी रेजोल्यूशन है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और रीनेमिंग ऑफकोर्स कैनवा में भी हो जाती है और कैनवस में भी हो जाती है। जो कैनवस हमारा विजिबल है वहाँ पर फ्रेम की डायरेक्टली हम कर सकते हैं रीनेमिंग, और देन हायरार्की के अंदर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है अगेन ये डेव मोड से रिलेटेड ऑप्शन है जिसमें हम टॉगल कर सकते हैं, और इसको बाय द वे टॉगल हम जो है फ्रेम को, अगर मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा तो ऑफ कोर्स इस पे
जब मैं इसको एक्टिव करूँगा तो हमारे पास ये जो है आइकन एक विजिबल है, और इसका मतलब ये कि डेव्स के लिए ये फ्रेम जो है ये रेडी टू डिज़ाइन है, ये उनके लिए रेडी टू डिज़ाइन है, इसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर यूजली आइकन भी हमारे पास जो है कभी कभी विजिबल होता है, और उसको भी यहाँ से सिमिलर आइकन को, जिसको हम यहाँ से भी जो है वो टिक कर सकते हैं और मार्केट डेव के लिए ओके कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो क्रिएट कंपोनेंट पे है, और अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई शेप है, कोई हमारे पास फ्रेम है, उसको हम क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे, और तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी हम जो है वो फ्यूचर में देखेंगे जब हम सेक्शन कवर कर रहे होंगे अपने पास कंपोनेंट्स वाला, तो इस पॉइंट को हम जो है वो तब देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मास्क है, और मास्क को हम इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और यहाँ पर एक फ्रेम ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करूँगा, और देन मैं अगेन आर प्रेस करके एक रेक्टेंगल टूल मज़ीद ले लूँगा, और उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं लाइक ये वाला। और फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये पोर्शन जो है हमारे पास जो है इनमें से ये दो हमारे पास शेप्स थी, और इनमें से इस सेक्शन को मैं मास्क आउट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इसकी विजिबिलिटी रहे। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं मास्क पे क्लिक करूँगा, तो जो मैचिंग हमारे पास सेक्शन होगा, जो उनका यूनियन पॉइंट होगा, तो उस वो जो है जो है हमारे पास मास्क आउट हो गया, और वही हमारे पास विजिबल है। और इस तरह से हम मास्क वाले को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास हायरार्की में भी कुछ इस तरह से जो है विजिबिलिटी हमारे पास होगी इसकी। और देन मैं इसको अनडू करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर अभी के लिए देखें तो नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल फ्रेम टूल पे था, ये यहाँ तक था, लेकिन अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें तो इन उधर देन इन ऑप्शंस के हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा होगा, लास्ट में आपको हमारे पास एडिट का आ रहा होगा, जिसको एंटर करके भी हम जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो इसको मैं क्लोज कर लूँगा, ये हमारे पास एडिट का था। और देन जो है जब हम चेक करें इन दोनों को सिलेक्ट करके, ये मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास जो है यूनियन, जिस पे लिखा रहा है, हालांकि यूनियन इसके ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, जिसमें से अगेन जैसे हमने मास्क आउट किया था, फॉर एग्जांपल हम यूनियन जो है इनकी शेप्स लेना चाह रहे हैं, तो हम यूनियन पे क्लिक करेंगे तो इनकी शेप्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। और अभी के लिए आपको उस इनर सेक्शन में जाएंगे तो ये शेप्स स्टिल लादा से हैं, जैसे हमने डिस्ट्रक्टिव शेप्स बनाई थी, ये उस तरह से वर्क नहीं कर रही। ये जस्ट अभी यूनियन हुआ है शेप्स का, और आउटर मोस्ट सेक्शन में देखेंगे तो ये यूनियन है दो शेप्स का। और सिमिलरली मैं इसको अनडू करूँगा जब तक ये यूनियन में नहीं थी, और यूनियन के अलावा हम जो है सब्ट्रैक्ट पे कर सकते हैं। तो ये सब इस शेप में से ये वाली शेप जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, और हमारे पास ये पोर्शन जो है वो रिमेनिंग था। देन सिमिलरली इंटरसेक्शन जो है उनका ये पॉइंट था, और इसी पॉइंट पे जो है वो विजिबिलिटी जस्ट रहेगी उतनी ही। अनडू करूँगा ऑफ कोर्स, देन जो है वो एक्सक्लूड जो है, और जितना इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, और रिमेनिंग पोर्शन जो है विजिबल है। और लास्ट में हमारे पास फ्लैटन है, और फ्लैटन में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लूँगा और उनका यूनियन क्रिएट करूँगा। और अभी के लिए देखें तो हमारे पास दो शेप्स अलग से हैं, और फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ कि ये शेप्स एक ही पॉइंट में, एक ही शेप के अंदर मर्ज हो जाएं, और ये अंडर वन ग्रुप जो है वो ना रहे। तो इस पर मैं फ्लैटन पे क्लिक करूँगा, और अब जो ये शेप है ये अंडर जो वन ग्रुप नहीं रही, ये एक डिस्ट्रक्टिव शेप है। और इस तरह से जो है हम फ्लैटन को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट अब हम फ्रेम पे अगेन आएंगे, हम उसी को मज़ीद देखेंगे थोड़ा। फ्रेम के अंदर जो है मैं एक और फ्रेम ले लेता हूँ, और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ले लूँगा, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसके फिल को जो है, लेट मी चेंज के इसके फिल को हम मैनुअली एक कलर सेट कर लेते हैं। और अब जो है आउटर फ्रेम में, क्योंकि वो किसी फ्रेम पे नहीं था, और इसको जो है थोड़ा समझना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी के लिए देखें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको क्योंकि ये हमारे पास ड्रैग करके मैं बाय ड्रॉप कर दूंगा, इसको ड्रैग करके मैं अगेन ड्रॉप करूंगा, तो हायरार्की में अगर देखें तो ये हमारे पास फ्रेम जो है आउटर फ्रेम की सिलेक्शन के अंडर आ रहा है, और ये इसका चाइल्ड है। तो जब मैं आउटर सेक्शन को फ्रेम को मूव करूंगा तो इनर जो अंदर कंपोनेंट है, एलिमेंट है हमारे पास फ्रेम है, वो मूव करेगा। तो अभी के लिए मैंने इसको रैंडमली ड्रॉप किया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अलाइनमेंट के ऊपर टॉप पर ऑप्शन है, हम डिफरेंट हम उनको चेकआउट कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए इस बटन में क्लिक करेंगे, या हम
अल्टरनेट ए कर सकते हैं लेफ़्ट की तरफ करने के लिए, अल्टरनेट डी कर सकते हैं हमारे पास जो है वो राइट पे करने के लिए, जो कि हमारे पास अगेन मैं इसको अंडू करूँगा और ये ऑप्शन है हमारे पास। और उसके लिए सिमिलरली अल्टरनेट डब्ल्यू हम प्रेस करेंगे और ये टॉप की तरफ चली जाएगी, जिसके लिए ऑप्शन हमारे पास ये है। और सिमिलरली हमें बॉटम में करना है तो अल्टरनेट एस करेंगे, जिसके लिए ऑप्शन लास्ट वाला हमारे पास ये है। ये करने के लिए हम कर सकते हैं इसको। देन हमारे पास है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल जो हैं वो आइटम्स हैं जिनको जो है हम अलाइन करना चाह रहे हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम उनको जो है अलाइन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो आइटम है ये वर्टिकली अलाइन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, अल्टरनेट वी ओ सॉरी अल्टरनेट एच प्रेस करेंगे और जो है वो हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएंगी, सॉरी माय मिस्टेक, वो हॉरिजेंटली जो है अलाइन हो जाएंगी। और सिमिलर आइटम्स को हम चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो जो है हमारे पास हॉरिजेंटली भी जो है हमारे पास सॉरी वर्टिकली जो है अलाइन कर दें, तो उसके लिए हम अल्टरनेट वी प्रेस करेंगे तो वर्टिकली जो है वो अलाइन होगी। ये हमारे पास हॉरिजेंटली अलाइन होगा और ये हमारे पास वर्टिकली अलाइन होगा। हॉरिजेंटली अलाइन के लिए जो है हम अल्टरनेट एच प्रेस करेंगे और हमारे पास वर्टिकली अलाइन के लिए आल्ट वी प्रेस करेंगे, या इन आइकन्स को दोनों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल की पोजीशन जो है वो यहाँ पर जो है हमारे पास लिस्टेड है। देन उसके नीचे कंस्ट्रेंट्स सारी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ये हैं। क्या फॉर एग्जांपल हमने इनको मैं रिमूव कर लूँगा या इवन इनके लिए इनको अभी के लिए रहने देते हैं। आई गेस एक्सप्लेन करना थोड़ा बेटर रहेगा डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस शेप को स्मॉल कर लेता हूँ कोर्स और यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं शेप को मैं इस तरह से। तो अभी के लिए देखें तो शेप्स जो हैं वो हमारी जो है वो फिक्स्ड हैं, उनके साथ जो है वो चेंजिंग इस तरह से नहीं हो रही। और अभी के लिए इसको मैं चेक करूं तो हम इनकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ और बॉटम की तरफ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारी हाइट और ये डिक्रीज़ करे तो लेफ़्ट की साइड से और टॉप की साइड से जो है हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है हो रहे। और फॉर एग्जांपल मैं फ्रेम को अगेन सेलेक्ट करके मूव करता हूँ तो हमारा जो पोर्शन था वो लेफ़्ट और टॉप की तरफ जो है वो अलाइन था, कंस्ट्रेंट था उसके साथ। तो वो अलॉन्ग दिस सेक्शन जो है वो मूव कर रहा है, उस सेक्शन के साथ जो है वो मूव कर रहा है। सिमिलरली इस सेक्शन को मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो टॉप के साथ है और हमारे राइट के साथ जो है वो अटैच रहे। सिमिलरली जब इस फ्रेम को मैं मूव करूँगा तो ये फ्रेम जो है वो जो इनर एलिमेंट है वो प्रॉपर उसके साथ अलाइन हो रहा है, मूव कर रहा है। सिमिलरली इस वाले का चाहेंगे कि हमारे लेफ्ट के साथ और बॉटम के साथ रहे, और ये हमारे ऑफकोर्स इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे लेट मी शो के ओके इस पर हमारे पास जो है वो विजिबल नहीं है। और ओके आई गेस मैं इसकी डुप्लीकेशन जो है लूँगा फर्स्ट, और इस पे जो है हमारे पास जो है राइट साइड पे और बॉटम साइड पे जो है विजिबिलिटी रहे। और इस पे हमारे पास क्यों इनेबल नहीं है, और उसके लेट मी सी यहाँ पर हमारे पास ओके आई गेस यहाँ पर कोई मिस्टेक है, कोई माइट भी बग हो जिस वजह से जो है विजिबिलिटी ना आ रही हो उसकी। तो एनीवे इसको डिलीट करते हैं। और क्योंकि मैं मेनली ये एक्सप्लेन करना था कि आप कंस्ट्रेंट इनके ऊपर लागें तो जिन पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट हमने एडजस्ट की हुई है हम आउटर फ्रेम को मूव करेंगे तो इनर सेक्शन जो है अलॉन्ग जहाँ पर उनकी कंस्ट्रेंट अटैच है वो अलॉन्ग दिस सेक्शन जो है वो उन सेक्शन के वो मूव करेंगे। तो कंस्ट्रेंट का एडवांटेज हमारे पास ये होता है। देन ऑफ कोर्स सिंपल है, यहाँ से जो है क्योंकि हमने मैनुअली सेट कर लिया तो हमारे लेफ्ट राइट ये सेटिंग हमारे पास वही है कि हमने लेफ्ट पे किया था और टॉप पे किया था। रोटेशन है, रोटेशन सिंपल है, हम उसको रोटेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। देन हमारे पास जो है वो फ्लिप की है, इसको मैं एक्सपेंड कर लूँगा मजीद और देन फ्लिप को एक्सपेंड करूँगा। हम इसको इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो सॉरी इसको जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप जो है हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं शिफ्ट एच से, और ऑफ कोर्स वर्टिकली जो फ्लिप है वो भी कर सकते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए शेप के ऊपर आ जाऊँगा और इस शेप को जो है हम किसी फ्रेम के अंदर जो है वो ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं स्मॉल कर लूँगा और किसी फ्रेम के अंदर जो है वो ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये किसी फ्रेम के अंदर आ गया। अब इस फ्रेम को हम चाह रहे हैं कि इसकी इनर शेप जो है वो फ्लिप कर जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये शेप जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो फ्लिप हो गया हमारे पास। सिमिलरली इसको करने के लिए हम शिफ्ट एच प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, और वर्टिकली जो है वो करने के लिए हम शिफ्ट पी प्रेस करेंगे और ये वर्टिकली जो है वो हमारे पास फ्लिप हो जाएगी सिमिलरली। तो इस तरह से हम फ्लिप को यूटिलाइज कर रहे होते हैं।
देन हमारे पास है जो पोर्शन, वो मेजर पोर्शन हमारे पास जब वो आता है, वो आता है ऑटो लेआउट्स का। और ऑटो लेआउट्स जो हैं वो हमारे पास जो है किसी भी फ्रेम को ऑर्गेनाइज करने का जो है हमारे पास किसी भी फ्रेम को उसके इनर एलिमेंट्स को जो ऑर्गेनाइज करने का जो है मेथड है वो ऑटो लेआउट है। और यही मेनली फिग्मा की स्ट्रेंथ भी है कि हम किसी भी चीज़ को जो है क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ एक टाइम के लिए बल्कि नेक्स्ट इन फ्यूचर फ्रेम की हाइट और विड्थ एडजस्ट हो तो जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं और जितने भी अलाइनमेंट है, जितने भी हमारे पास कंटेंट है, वो खुद को जो है अलाइन कर रहा हो और जो है ऑर्गेनाइज कर रहा हो। तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक फ्रेम है और आउटर में भी एक फ्रेम है और इनर में भी एक फ्रेम है और एक हमारे पास टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में हम राइट कर लेते हैं ABC। तो इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूँगा। ओके, 96 पे रख लेते हैं अभी के लिए। तो आउटर में एक फ्रेम है, उसमें जो आउटर का फ्रेम है वो उसका पेरेंट फ्रेम है इस टेक्स्ट का। टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर ड्रॉप किया हुआ है हमने। और अभी के लिए देखें तो इसके अलाइनमेंट जो है हम रैंडम इस तरह से कर देते हैं। और अभी चाह रहे हैं हम इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई करना। और हम चाह रहे हैं कि ऑटो लेआउट जो है वो हमारे पास अप्लाई हो। ऑटो लेआउट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम उसको वर्टिकली कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। वर्टिकली करने का मकसद क्या है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इस पर XYZ लिख लेंगे और इसकी पोजीशन जो है थोड़ी रैंडम अगेन कर लूँगा। अभी के लिए देखें तो इस फ्रेम के जो ऑटो लेआउट है वो इनेबल एक तरह से नहीं है और ये फ्री फॉर्म है। ऑटो लेआउट इनेबल करने के लिए हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे या डायरेक्टली हम जो है इन ऑप्शंस के ऊपर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो लेआउट भी इनेबल हो जाएगा हमारे पास। तो अभी हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है ये टॉप पर रहे और ये वाला टेक्स्ट जो है हमारे पास बॉटम में आए। तो उसमें के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल जो ऑटो लेआउट है और उसकी अलाइनमेंट जो है वो वाला जो है फ्लो है अप्लाई करेंगे। तो जो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक चीज़ हुई है कि एक तो उसने क्या किया कि उसको अलाइन कर लिया है कि हमारे पास जो ऊपर वाला टेक्स्ट था टॉप पर, वो ABC वाला वो टॉप पर है और जो XYZ बॉटम वाला टेक्स्ट था वो हमारे पास बॉटम में आ गया है। और दूसरा उसने शेप अपनी को चेंज कर लिया। शेप चेंज करने का मकसद मतलब ये है कि उसने अपनी जो उसकी विड्थ थी उसको भी और जो उसकी हाइट थी उसको भी जो है वो चेंज किया। और यहाँ पर चेंज जो है वो इस वजह से आया है क्योंकि ये हमारे पास अगर ड्रॉप डाउन में देखें तो फिक्स साइज़ है, फिक्स विड्थ है और फिक्स साइज़ में फिक्स हाइट ये रही है हमारे पास। तो इस तरह से जो है ये फिक्स में है। लेकिन अगर जब हम ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हग स्टेट्स में चली जाती है। हग स्टेट का मतलब ये है कि जितनी भी फ्री स्पेस है उसमें जो है वो उसको रिमूव करना और जितना भी इनर कंटेंट है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेना। और अभी के लिए देखें तो यहाँ पर जो है ऑटो हाइट अप्लाइड और हम चाह रहे हैं कि इसकी टेक्स्ट की भी इनर जो है जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ये फिल आउट हो जाए, जो फिल एम्प्टी स्पेस है वो ऑटो विड्थ में अप्लाई करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट की जो है वो रिमूव होगी। इस टेक्स्ट की अभी रिमेनिंग है तो इस पर भी हम क्लिक कर लेंगे। देन हम चाहेंगे कि ये वाले स्पेस जो है जहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भी अलाइन हो जाए हमारे इस टेक्स्ट के साथ। तो हम विड्थ को जो है वो आर्क स्टेट में करेंगे तो इस तरह से हमारी जो एम्प्टी स्पेस है रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली हाइट में जो है वो हमारी जो एम्प्टी स्पेस है वो भी रिमूव हो जाएगी। देन हमारे पास इसको मैं एक दफ़ा फिर एक्सपेंड कर लूँगा। आर्क स्टेट्स जो है वो निकाल लेंगे। जो ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा हमारी आर्क स्टेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स स्टेट्स में जो है कन्वर्ट हो जाएंगी। देन हमारे पास अलाइनमेंट है। अभी के लिए देखें तो टॉप लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट है और देन जो है ये मिडल टॉप की तरफ है और ये जो है राइट टॉप की तरफ है। सिमिलरली ये सेंटर में है, बॉटम में कर सकते हैं, सेंटर बॉटम में, लेफ़्ट बॉटम में कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सेंटर में रखता हूँ और नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए इस पर अगर होवर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 12 हमारे पास गैप है। इन दोनों के दरमियान का गैप कितना है और उस गैप को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास पैडिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से मैं बॉर्डर्स के ऊपर मैं जाऊँगा और देखूँगा तो यहाँ पर 16 की पैडिंग हमारे पास की मैंने। और उस पैडिंग को जो है हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि हमारे पास पैडिंग का जो है वो करें। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमारे पास विड्थ जो है वो हग स्टेट में हो लेकिन जो है वो इंस्टेड के मैं तो ये 0 पुट कर लेता हूँ। मैं अभी इसको विड्थ को हग स्टेट में करता हूँ तो ये जो है बिल्कुल प्रेस हो गया, कंप्रेस जो है उसने अपने बॉर्डर्स जो है क्लोज कर लिए हैं टेक्स्ट के साथ। तो मैं ये चाहूँगा कि इंस्टेड के ये हो थोड़ी सी पैडिंग जो है वो लेफ्ट राइट पे रहे, थोड़ी सी स्पेसिंग जो है रहे। तो उसके लिए मैं पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ थोड़ी सी। और जो मैंने पैडिंग अप्लाई की तो अभी भी हग स्टेट के अंदर ही है, एक चीज़ नोट करने वाली है। और दूसरा ये कि पैडिंग जो है वो अप्लाइड हो गई है और पैडिंग की वजह से जो है वो
हमारे पास लेफ्ट राइट में स्पेस आ गई। सिमिलरली पैडिंग हम जो है वो ऐड कर सकते हैं टॉप बॉटम के लिए, और इस तरह से गैप पैडिंग और जो पैडिंग लेफ्ट राइट के लिए और पैडिंग टॉप बॉटम की हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा मेजर पोर्शन है हमारा उससे रिलेटेड के ऑटो लेआउट से रिलेटेड, और क्या कैसे हम चीज़ों को उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। फर्दर इनको हम कंपोनेंट वाले सेक्शन में भी देख रहे होंगे कि कैसे जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इवन स्टाइल गाइड के ऑप्शन में भी जो पोर्शन है उसमें भी देख रहे होंगे कि कैसे चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज हम करते हैं ऑटो लेआउट के थ्रू। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास ऑफ कोर्स क्लिप कंटेंट है। इसको जो है वो एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इवन दो इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हम इफेक्ट्स वगैरह ये स्टाइल गाइड में अपने क्रिएट करेंगे तो हम कैसे इसको इनेबल डिसेबल करके जो है अपने इफेक्ट्स वगैरह जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो मेजर पोर्शन है हम स्टाइल गाइड के अंदर ही कवर कर रहे होंगे, इवन फील स्ट्रोक और इफेक्ट्स का, जहाँ पर हम स्टाइल्स भी क्रिएट करेंगे और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो साथ देख रहे होंगे। और लास्ट में एक चीज़ ये कि हम किसी भी अपने फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शेप है, हम उसको जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट का भी आ जाएगा। तो यहाँ से प्रीव्यू भी हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट से पहले, और देन उसको जेपैग में कर सकते हैं, बीएनजी में कर सकते हैं, और एसवीजी और पीडीएफ में भी सो ऑन, और साइज़ वगैरह भी हम आपको एडजस्ट कर सकते हैं। और देन उसको जो इमेज है हमारा कोई फ्रेम है, अगर फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो के लिए करना है या क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है या फ्रेम जो है रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, तो उनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ जो है अभी मैं अगेन शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा। ऑफ कोर्स हम जूम इन के लिए जो है कंट्रोल प्रेस करके जूम इन करते हैं, और कंट्रोल के लिए जो है जूम आउट करने के लिए जो है स्क्रॉल व्हील डाउन करते हैं, अप और डाउन से स्क्रॉल से, और साथ में हमने कंट्रोल प्रेस किया होगा। और सॉरी फॉर डैट कि इस चीज़ को मुझे स्टार्ट में एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन आई गेस अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में आप यूज चुके हैं तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये ऐसा चाहिए मुश्किल भी नहीं है। जस्ट मैं जो है करना चाह रहा था, एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। और देन नेक्स्ट ये है कि अभी के लिए हम देखें तो काफ़ी सारा कंटेंट है हमारे इसमें कैनवास में, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम कंटेंट को जो है वो कवर कर ले। हमारे ये जो फ्रेम है, जितने भी हमारे पास विजिबिलिटी है, कैनवास जो है जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास विजिबल हो, तो उसके लिए हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो हमारा जितने भी हमने कंटेंट क्रिएट किया हुआ होगा तो फ्रेम उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जितने भी फ्रेम्स हैं उसको कवर कर रहा होगा। और देन फॉर एग्जांपल कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इस फ्रेम की जो हमने सिलेक्शन की भी हमारे जो व्यू है उसके ऊपर चला जाए, तो हम शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से जितने भी पार्ट हमने सेलेक्ट किए हुए होंगे, फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपल किए हुए हैं, तो हमारी सिलेक्शन जो है उनकी उस बेस पे जो है उस व्यू के बेस पे होगी जितनी भी सिलेक्शन हमने की हुई है। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी उधर, देन के हम जो नॉर्मल यूटिलाइज़ कर रहे होंगे इनके। और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम यूटिलाइज़ करेंगे, एक फ्रेम पे मैं क्लिक कर लूँगा और राइट क्लिक करेंगे, तो इस फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम फ्रेम के इंटरसेक्शन में, आपको बाहर में करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास ये ऑप्शन जो है इनेबल नहीं होंगे। और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिस्टेड है, और इन प्रॉपर्टीज़ में हम जो है वो कवर कर रहे होंगे डिफरेंट जो है वो पोर्शंस को, डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे। उसमें हम जो है वो जो कोर्स के अंदर चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे तो देन हम इनको बारी बारी जो है वो देख रहे होंगे। और ऑफकोर्स अगर जूम आउट किए बगैर आप मूव करना चाह रहे हैं तो स्क्रॉल व्हील से आप डाउन की तरफ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आप हॉरिजॉन्टली जो है वो लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आई गेस मेजरली जितना भी एटलीस्ट इसमें कोर्स में पोर्शन हम जो है कंपोनेंट्स और टूल यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो आई गेस हमने सब कवर कर लिए। और नेक्स्ट इसके बाद जो है हम जो है ऑफकोर्स कोर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।